अच्छा लाइव हो गए आई गेस लाइव हो गए. हेलो गाइस, मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट कल एज यू ऑल नो दैट बहुत लेट तक हम जागे थे, तो इसलिए लेट उठे हैं और इसलिए थोड़ा लेट हो गए. सो सॉरी, बट यस. आ जाओ सब आ जाओ. मस्त से सब लेट, मेरे लेट होने का मजाक उड़ा रहे हैं क्रेजी. बट आ जाओ. बात करेंगे थोड़ी फुटबॉल की और थोड़े चेल्सी के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी मस्त से. ठीक है. तब तक मैं जिनके सब कमेंट्स हैं सब ले लेता हूँ. लेट आदित्य रावत, बासा बनी बोलते लेट ओपी. मैक्सिन मोहतरमा भी बोल रही हैं लेट ओपी. आर्यन राघव बोल रहे गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग. गणेश बोल रहे लेट, सो सॉरी. फ्रीडम 8 मिनट लेट. यस, आई एम 8 मिनट लेट. मैं खुद बोल रहा हूँ 2 मिनट. एंड श्रिंजॉय बोल रहे हैं फास्ट ओपी. एज एस आर के सेज आ रहा हूँ मैं. व्हाट डू तुषार शर्मा. आर्यन देसाई गुड आफ्टरनून. आर्यन देसाई गुड आफ्टरनून भाई. गुड आफ्टरनून. अमल हेलो. मनन रुनवाल हेलो. हार्दिक सिंह हेलो. ऑनेस्टली मेरा प्यार है तू, मेरा प्यार भी है तू भाई. शिंजो दे गुड मॉर्निंग. क्रिस्टा टंटन बहुत जल्दी उठ गए. मार्करोनी ग्रेट थंबनेल. मार्करोनी भाई, ह्यूज क्रेडिट टू मार्करोनी भाई फॉर द थंबनेल. देन पेसोपी गुड आफ्टरनून. मजा ही आ गया रात में स्ट्रीम में भाई जी, और सुबह फिर स्ट्रीम तुषार शर्मा. यस, दैट्स द वे वी रोल ऑन वीकेंड्स ऑन आदिदेव गुरुज्ञान. ठीक है, वीकेंड्स पे ऐसा ही सीन रहेगा मोस्टली. अगर सैटरडे रात को मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊँ तो इस टाइम पे तो आपको मैं एक स्ट्रीम करता हुआ नजर डेफिनेटली आऊंगा. वाईजेआर को भी बुला लो, शायद वाईजेआर इस टाइम पे ना आए. ठीक है, उनको तो बहुत बार बुलाया है ट्राई करने को, बट बहुत बार बुलाया, कभी ना कभी वो बिजी ही हो जाते हैं. अपने चैनल पे आजकल बहुत एक्टिव हो गए, तो वही चीज़ है, अच्छी बात है. ठीक है. But um, let's talk about the football this week. Let's start off with yesterday, क्योंकि yesterday की मेमोरी थोड़ा थोड़ी फ्रेश है. यार चेल्सी कल जीता 2-1, बट थिंग इज नाउ कि आई विल रियली नॉट काउंट इट एज अ मैच. ठीक है, ऐसा हमने क्लोज डोर से गेम खेला था जिसमें हम 2-1 जीते. काने चुको में हमने दोनों गोल मारे. It almost felt like we were playing Sri Lanka. ठीक है, like India is playing Sri Lanka in cricket. It almost felt like that. तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या बात करें. Let's talk about Leicester and Spurs. That game 6-2 Spurs जीती against Leicester. And आप अगर गेम देखें और आप अगर गेम को थोड़ा एनालाइज करने को भी ट्राई करें, सेट पीसेस से लेस्टर वर वेरी 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 वीक. ठीक है. पुनीत, पहले मैं सबसे सबको ये बोल देता हूँ कि आज ये सोलो स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सोलो स्ट्रीम कर रहा हूँ, सो पहले वो चीज़ क्लियर आउट कर देता हूँ. तो या लेट्स गेट इनटू द फुटबॉल अगेन. Leicester seemed like they were very, very weak in set pieces, and it is भाई बहुत inevitable चीज आ रही है कि शायद ब्रेंटन रॉजर्स को सैकिंग मिल जाए. Because right now when you're looking at this Leicester team, they are very methodical in approach. लोग बोल रहे थे भाई जेम्स मैडिसन को इंग्लैंड का कॉल अप क्यों नहीं मिला, एंड ये बहुत अनफेयर चीज है. गैरेट साउथगेट जैक ग्रीलिश को ले रहे हैं, पर जेम्स मैडिसन को नहीं ले रहे, विच इज अ फेयर आर्ग्यूमेंट. बट आप अगर ये भी देखें कि जेम्स मैडिसन इस सीजन लेस्टर के लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहे थे, बट ऑब्वियसली इंजरी इश्यूज हैव रिडल्ड हिम. बट आप ये आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जेम्स मैडिसन इन द पोजीशन दैट ही इज प्लेइंग इन एट लेस्टर, आपको क्या लग रहा है कि द अदर पीपल इन इंग्लैंड हु आर प्लेइंग, ठीक है, जेम्स मैडिसन के जगह पे, ठीक है, वो लोग जेम्स मैडिसन से इंफीरियर है वो पोजीशन में? नहीं, वो उससे बेटर है वो पोजीशन में, वो नेचुरली बेटर है. सो आई थिंक जेम्स मैडिसन को कॉल अप नहीं मिलना is an absolutely fine thing, because he's been good at Leicester, but he's not been amazing at Leicester this season. Okay, because if he was amazing, Leicester would have stepped it up a notch, and they haven't. Very clearly, they haven't. Uh, as a unit, they are failing.
as a complete unit they are failing. It's not just on Brendan Rodgers as well. As a complete unit they are failing. And मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि आप अगर उनकी टीम में देखेंगे तो ऐसे 2-3 स्टार्स के ऊपर वो बहुत हेवीली रिलाई कर रहे थे. इन गोल देयर वाज कैस्पर श्माइकल, तो जो अभी नहीं है. फॉरवर्ड लाइंस को जो फॉरवर्ड में जो थे, जेमी वार्डी जो थे, अब तक वो बहुत प्रोलिफिक रहे थे. अब तक ही वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट व्हेन इट कम्स टू गोल स्कोरिंग. ही इज नॉट हैड हिज शूटिंग बूट्स ऑन. उसके बाद आप जेम्स मैडिसन के बारे में बात कर रहे हो. अ फेयरली गुड सीजन बट नॉट अ फैंटास्टिक और अ वंडरफुल स्टार्ट टू द सीजन. ही हैजंट हैड दैट एज वेल. यूरी टिलेमन स्कोरिंग यस्टरडे, बट अगर ये यूरी टेलेमेंट्स का बहुत ऑन एंड ऑफ वाला जोन रहा है. हीट ब्रेंडन रॉजर्स पे आएगी फॉर श्योर, बिकॉज इट इज हिज जॉब टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज प्लेयर्स. एंड I think definitely after Tuchel, for me, if somebody has to get the sacking, it has to be Brendan Rodgers. So I think that is for Leicester. So, but when I have to talk about Spurs as a unit as well, Conte, लोग डाउट कर रहे थे कॉन्टे को आफ्टर दैट चैंपियंस लीग डिबैकल. ठीक है, लोग डाउट कर रहे थे कि भाई मतलब कॉन्टे चैंपियंस लीग में कभी सही नहीं करता है. एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपको ऐसा लगता होगा कि कॉन्टे चैंपियंस लीग का वैसा मैनेजर नहीं है, पर कल जब आप लेस्टर की थ्रैशिंग देखेंगे आपको बहुत कॉन्टे टाइप क्वालिटीज दिखेंगी उस पर्टिकुलर थ्रैशिंग में. बिकॉज आपको एक चीज होती है मैन मैनेजमेंट, कॉन्टे की मैन मैनेजमेंट ऑफ सॉन की सिचुएशन जो अब तक रही है बहुत अच्छी रही है. क्योंकि अभी जब रिसेंटली उन्होंने कमेंट किया कि भाई सॉन इररिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है, वो ये चीज मैंने पहले एक स्ट्रीम में बताई थी कि जब आप कोई टीम में अपनी छाप छोड़ देते हैं, अपनी स्टैंप छोड़ देते हैं, स्टैंप ऑफ अथॉरिटी छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि चलो मैं इररिप्लेसेबल तो नहीं हूँ, ठीक है, अब तो यार मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, अब तो भाई मतलब ये स्टार्टिंग 11 मेरा आना तो बनता ही बनता है. आई थिंक सॉन हैड रीच्ड दैट सिचुएशन इन टॉटनहम, ठीक है, दिस सीजन. एंड दैट गेव वे टू सम सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस. और जब कॉन्टे ने ये वाली स्टेटमेंट मारी, सॉन के अंदर एक आई थिंक सॉन गॉट दैट मोटिवेशन कि भाई अब थोड़ा डर है कि ये शायद रचालिसन मेरी जगह ले ले, तो आई नीड टू स्टेप अप. एंड yesterday he did. It was only a matter of time before Son starts scoring goals on a very regular, or before Son starts scoring goals, and he scored a sensational hat trick yesterday. But it was all down to how Conte handled this situation and gave Son that motivation to probably step it up a notch. And the whole Tottenham team did that yesterday. It was amazing to watch. And it is, if लोग बोले कि टॉप 4 के लिए टॉटनहम is not a great shout, I will not believe it, because they are definitely a great shout for the top 4. अभी मैं थोड़ा सा कमेंट्स देता हूँ आपके. Son back like he never left. मयूख रक्षित, हाँ वो भी है. श्रीलंका को हल्के में नहीं ले सकते. एशिया कप विनर्स बॉयज, जब एशिया कप जीती थी मेरे डैड को बोल रहे थे ये क्या चल रहा है यार, श्रीलंका कैसे जीत गई एशिया कप. बट यार सॉरी ने गुस्सा निकाला. एंजॉय, सही बात. यार खोचा पे मेरी राय ये है कि खोचा इज अ डायरेक्ट ड्रिबलर, ठीक है. एंड जब वो बॉक्स के अंदर आते हैं, ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स के अंदर आते हैं, तो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं उधर, बिकॉज वो उनके कटबैक्स बहुत होते हैं वंस ही कम्स इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, एंड दोस कटबैक्स यूजुअली फाइंड अ टीममेट. सो कुचा कैरेट्सकेलिया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत अच्छे प्लेयर है इन दैट पर्टिकुलर जोन. एंड यस, ड्रिबलिंग कैपेबिलिटीज एंड डायरेक्ट रनर इन दैट एस्पेक्ट कुचा कैरेट्सकेलिया बहुत अच्छे प्लेयर हैं. तो वही चीज मुझे लगती है. एंड आई वुड रियली लव टू हैव हिम इन द प्रीमियर लीग, बट आई थिंक ही नीड्स टू स्पेंड सम मोर टाइम एट नापोली राइट नाउ. ठीक है, ही नीड्स टू डेवलप अ लिटिल बिट मोर इन नापोली. ही इज एन अमेजिंग प्लेयर फॉर मी. अभिषेक सहस्रबुद्धे मेरी फेवरेट इंटरनेशनल टीम फ्रांस है ब्रो. कॉन्ट्री ने नया सेट पीस कोच हायर किया था इन जून से 6 से 7 गोल स्कोर कर दिए सेट पीस पे. हाँ, लगता भी है, बिकॉज आई थिंक जैसी सेट पीसेस में वो कल जैसे सेट पीसेस कल थी, इट लुक्ड लाइक दैट दे आर वेरी वेरी डेंजरस ऑन सेट पीसेस. GTA 6 लीग सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.
देखेंगे, ये देखेंगे। वॉच लॉन्ग शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना है आफ्टर गेटिंग अ जॉब, सो मुझे अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना है, फैमिली को थोड़ा टाइम देना है, तो मैं अपने आप से मैं देखूंगा ड्यूरेंट कप। बट प्लीज जिनको आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द नॉन इंडियन फुटबॉल फैंस, प्लीज वॉच द ड्यूरेंट कप फाइनल टुडे, मजा तो डेफिनेटली आएगा। ओके, मयंक त्रिवेदी चाहते हैं कि मैं बादशाह के बारे में बात करूं, चलो बादशाह के बारे में बात करते हैं। लेवन गोल्स की, लेवन गोल्स की again in the goal scoring column against I think Elche के against 3-0 की जीत पाई बार्सिलोना ने। एंड डेफिनेटली जब आप वो गेम, मैंने वो गेम लाइव नहीं देखी क्योंकि मैं उस टाइम पे काम कर रहा था, मैंने गेम लाइव नहीं देखी, पर मैंने जब हाइलाइट्स देखे, ठीक है, और जब मैंने थोड़ी सब चीज़ें पढ़ी उसके बाद, इट वाज द सेम स्टफ, इट वाज द सेम स्टफ। बट व्हाट इज एक ट्रेंड जो मैंने देखी है कि आप usually now when the game is almost said and done and if Memphis Depay is on the pitch he will score, ठीक है। तो मेम्फिस, रुक जाओ, तन्मय कुछ या करच के लिए प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकता क्योंकि जॉर्जिया की फीफा रैंकिंग 82 है। थैंक्स थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, बट अगर ऊपर आ जाए तो प्रॉब्ली खेल सकते हैं। बट एनीवेज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, आप ये एक अनसेट ट्रेंड है कि अगर शुरुआत, इफ बार्सिलोना स्टार्टेड दिस गेम रियली वेल एंड इफ दे फिनिश्ड द गेम प्रीटी वेल, ऑलराइट, or if they're 2 goals up, I think Memphis Depay more of at least 7 out of 10 times he scores a goal at that particular situation, ठीक है। और ये सब मैंने मैंने चीजें काफी नोटिस किया विद बारसा गेम्स, एंड मेम्फिस डिपाई डिड दैट यस्टरडे एज वेल। भाई आप जब, यू कांट डिस्काउंट अ प्लेयर एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेम्फिस डिपाई का, जब मैंने बोला था कि ही कांट प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है, I meant it, but I also meant the fact कि as a left winger, cutting in from the left, inside forward, ठीक है, getting into the box diagonally, ठीक है, he's a fantastic player in that aspect, ठीक है। And जब आप क्या बोलते हैं, जब आप बास इसकी प्रीवियसली जब मेम्फिस डिपाई ने स्टार्ट किया था एज अ सेंटर फॉरवर्ड, I said he was very disappointing, but this is the point that I was trying to make. Give him minutes. Give him minutes on the pitch. Give him minutes on the pitch. आपकी आपकी बेंच स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग बनाइए by giving your bench players a lot more minutes against some of these lower ranked teams, ठीक है। yes, you need to win, that's absolutely there, you need to win, but ये combination बनाइए रखिए of your bench strength players and your first team players like Lewandowski to be better, so that your bench strength can be absolute top quality and improve with every game. So इसलिए शायद Barcelona this time out it was very fresh and it was very क्या बोलते हैं refreshing to probably see this result against Elche. But I think it was an amazing result for all Barcelona fans. Anand Raka बोल रहे, is Memphis like Grealish? I know, weird question. No, Grealish attracts fouls, and it's a very like I understand a lot of frustrations around media bases, a lot of frustrations around football fans as well कि सब Grealish के ऊपर बोल रहे कि यार ये तो चूतिया साइनिंग हो गई, all of that crap. ये सब ना बहुत सरफेस लेवल वाले कमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप ग्रीलिश की प्ले को आप एनालाइज करोगे, थोड़ा मुझे विलियन वाला वाइब आता है ग्रीलिश से, ठीक है। विलियन वाले विलियन वाला वाइब ऐसा क्यों आता है, कोई चेल्सी के विलियन वाला वाइब आता है, ठीक है। तो चेल्सी का विलियन वाला वाइब ऐसा था कि जब विलियन व्हेन ही यूज्ड टू रोम ऑन द हाफ स्पेस, ठीक है, राइट हाफ स्पेस पे जब वो रोम करते थे, तो वो ना ओपोनेंट को एंगेज करते थे अपने सामने और थोड़ी देर के लिए बॉल को होल्ड करते थे, थोड़ी देर में बॉल के साथ वो ऐसे चलते थे हॉरिजॉन्टली, जो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर दैट टर्मिनोलॉजी, वो ट्रिक को क्या बोलते हैं, बट वो बॉल को ऐसे देखते और उसके सामने ओपोनेंट बॉल को देखता था और वो ओपोनेंट के फीट को देखते थे और वो ऐसे बॉल के साथ हॉरिजॉन्टली चलते थे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट ग्रीलिश आल्सो डज, और और ग्रीलिश डज ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, ठीक है। पर इसका एडवांटेज ये होता है कि आप ना जब आप एंगेज कर लेते हो ना अपनी अपने
अपने ओपोनेंट के डिफेंडर का अटेंशन अपनी तरफ, उस टाइम पे ना इट गिव्स योर टीममेट्स द चांस टू गेट फॉरवर्ड, ठीक है. इट आल्सो गिव्स द ओपोनेंट द चांस टू reorganize themselves. But in cities, I think in city system it is more important for your teammates to get into the certain positions where you can affect the play a little bit more. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पोजिशनल प्ले की बात करते हैं तो एक पिच जो है डिवाइड होती है पांच 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 भागों में, ठीक है. वर्टिकली पांच भागों में डिवाइड होती है. हर एक भाग में एक एक प्लेयर को रहना जरूरी है. ग्रीलिश, with how Grealish works the ball in such spaces, there is he waits for these spaces to be occupied by one City player, and that's what happened. That's what happens when Grealish does this. ये सब चीजें शायद बहुत सारे लोग बात नहीं करेंगे because Grealish doesn't score a lot of goals, doesn't get a lot of assists right now, but behind the scenes work बहुत अच्छा है. I was very happy that when Grealish got the goal yesterday. It was मतलब वो intent था उनमें when he got inside the penalty box and got the touch to steer it across, to steer it past the keeper. बहुत अच्छा इंटेंट था, वो चीज थी. बट अगर आप देखें ग्रीलिश, that particular trait of Grealish and also attracting fouls, Grealish को बहुत फाउल किया जाता है. कल उन पे पता नहीं क्या कर रहे थे वो नेथन कॉलिंस, जब वो पूरा WWE टाइप किक मारने को जा रहे थे. बट Grealish is the person who does attract a lot of fouls in that aspect. So that is a very underrated quality in a footballer currently, because if you have to play for set pieces, you need to have a player who attracts fouls. So Grealish is in that particular zone. तो इसीलिए मुझे लगता है कि Grealish can only get better, ठीक है. numbers नहीं है उनके पास, but he can only get better with time. So yeah. देखते. भाई लियोन में तो फर्स्ट में खेलता था, बहुत बढ़िया खेलता था यार. खेलता तो था बट लियोन में खेलता था ना यार. लियोन में खेलता था. I'm not, but I know you must be saying demeaning the league. गुरुजी क्या कर रहे हो, मतलब लीग को डिमीन कर रहे हो. बट द La Liga playing for Barcelona, and probably if that transfer would have happened, playing for Chelsea are two different ball games, okay, and playing in these leagues are two different ball games. So I really think that playing in Leon as a false nine doesn't exactly uh, correlate to him playing potentially good in that particular position for Barcelona or for Chelsea. So yeah, Fatih still looks somewhat out of sorts. Yeah, since the time he's come out of injury, Fatih has looked out of sorts, and this is not. We can't run away from. There is no मतलब मैं इस पे बटर नहीं लगाऊंगा, ठीक है. He is. It is worrying. It is worrying. He has looked out of sorts with the expectations that were thrown upon him after Messi's departure. It, matlab, the journey since that time for Ansu Fati has been quite unlucky. I will not say it has been bad. It has been very unlucky for him. And right now, situation ऐसी हो गई है कि Ansu Fati to make that position his own, because अभी आपको एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है. कि आपकी कंपनी में, ठीक है, आपकी कंपनी में एक एब्सोल्युटली सेलिब्रेटेड एम्प्लॉय अभी अभी छोड़ के गया, ठीक है. और आपको बोला कि आप हो उसके नेक्स्ट सक्सेसर. तो पूरी आपकी पूरी टीम की आंखें ना वो आप पे आ जाती हैं कि आप लेके चलोगे पूरी की पूरी टीम को या पूरी कंपनी को, आप लेके चलोगे मस्त से आगे, ठीक है. एंड आप हो आंसू फाटी करंटली. बट सीन नहीं हो जाता है कि फिर आपने बोल दिया कि मुझे मेडिकल लीव लेनी है 2-3 महीने की, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, 2-3 महीने की मेडिकल लीव लेनी है और आप मेडिकल लीव पे चले जाते हो, ठीक है. उन 2-3 महीने में ऐसे ऐसे कुछ और एम्प्लॉइज आ जाते हैं, इंडक्ट हो जाते हैं आपकी आपकी टीम में, जो एकदम कड़क है, जो एकदम अपनी अपनी जगह, आपकी जगह को ना, आपकी जगह के ऊपर आ जाते हैं और मतलब धागा खोल देते हैं कि भाई मतलब दिस इज आवर प्लेस. एंड these members are Ousmane Dembele and Rafinha. इसीलिए जब आप वापस ऑफिस आते हो और आप देखते हो कि शिट यार मेरी जगह तो और किसने ले ली, और आपके दिमाग में आई वाज सपोज टू बी द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर लियोनेल मेसी.
in Barcelona, because I was supposed to, there cannot be another Lionel Messi, obviously, but everyone was looking up to me after Messi left. So uh, this this is quite unlucky for Ansu Fati. This situation is very unlucky for Ansu Fati. He will improve, but I don't think so. He will get to the ceiling. जो सीलिंग सेट किया था आपने उस टाइम पे आंसू पार्टी के लिए, वो सीलिंग टच करना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहेगा, because currently there are players better than him in that position with the potential of those players getting better in the future. That is Dembele and Rafinha. They can definitely get better in the future. तो वो डेंजर है आंसू फाटी के लिए. Ayanaga asking that in terms of roles for respective teams, because both inside forwards with close to similar qualities. Memphis likes to cut inside, and Memphis, when it gets inside the box, तो I think उनकी decision making abilities are थोड़े rash है. ग्रीलिश की मुझे इतनी रैश नहीं लगती, थोड़ी सेफ लगती है. आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पता है भाई अंकित, पता है. आई नो, आई सीन हिम प्ले एज अ फॉल्स नाइन फॉर लियोन, एंड ये जो आपने जो स्टार्ट भी दिया है, ये भी सही ही है, बट आप एक्सपेक्टेड असेस यार. अब मैं आपको एक बहुत सही वाला एग्जांपल वापस दूंगा यार. अभी देखो डच लीग में, ठीक है, अगर किसी बंदे ने बोला उसके गोल, उसने गांड फाड़ दी डच लीग में, मतलब 30-35 गोल्स मार दिए, तो आप तो फिर बोलोगे कि भाई मतलब यूरोपियन लीग्स में दिस दिस पर्सन इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट. ठीक है, 35 गोल्स मार दिए हैं, ठीक है, एंड if he comes into any of the top leagues of Europe right now, aka Spain, Italy, England, any of these leagues right now, Germany, any of these leagues right now, he should score. वो एक्सपेक्टेशन आप उन पे रख लोगे, बट वो एक्सपेक्टेशन बहुत अनजस्ट है, बहुत अनजस्ट है. एंड दैट इज नॉट द लेवल एट विच यू शुड मेजर प्लेयर्स. हर लीग की एक कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है. कैलम हडसन ऑडोय रियली डिडंट वर्क आउट फॉर अस रिसेंटली फॉर चेल्सी. ही वाज रियली नॉट वर्किंग आउट. बाय लेवरक्यूसन आग मूत रहा है वो लिटरली आग मूत रहा है बाय लेवरक्यूसन में. सो आई फील दैट इज दिस. I'm so sorry, Ankit, but these kind of statements don't really hold any value when it comes to judging a certain player. You can only judge that player from the eye test that you do once that player plays for the team, or plays for the current team, or for the current league, that is aka Barcelona, or if you would have played for Chelsea. He is not fitting the eye test. He is not fitting the eye test as a false nine, and it's absolutely valid to probably judge it on the basis of that itself. I agree with you that he's not a proper falser. Just say that he's always been good in cutting in from the. वो तो है, वो तो है, ठीक है, वो तो है. यस भाई, सुनील छेत्री ने इंडिया की सब टॉप डोमेस्टिक ट्रॉफी जीती है, बस ड्यूरेंट कप नहीं जीता. शायद इस बार जीत जाए. इवन बेंगलुरु जो है, उन्होंने, उनके पास एवरी ट्रॉफी है सिंस देयर इंसेप्शन. दे हैव एवरी इंडियन फुटबॉल ट्रॉफी, फुटबॉल इंडियन फुटबॉल ट्रॉफी इन द सर्किट, बट बेंगलुरु एफसी डोंट हैव द ड्यूरेंट कप. एंड इसलिए बेंगलुरु एफसी, सुनील छेत्री, दोनों के पास इंसेंटिव बहुत है ड्यूरेंट कप जीतने को. सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द गेम. प्लीज आप जिन जिन लोगों को पता नहीं है ड्यूरेंट कप के बारे में, प्लीज, आज ड्यूरेंट कप का फाइनल है, बेंगलुरु एफसी खेलेगी ड्यूरेंट कप का फाइनल. प्लीज प्लीज वो आप देखना. आई डोंट नहीं यार, ये सब चीजों में मत फंसिए. ये सब चीजों में मत फंसिए. वो ये 4-4-3, ये सब चीजों में मत फंसिए. ऑल ऑफ दीज आर जस्ट फोकस फोकस थिंग्स. यार रोमिंग फ्लैंक प्ले स्टाइल का मतलब ये होता है कि देख, राइट पे नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेडिशनल विंगर, लेफ्ट पे अगर तुम खेल रहे हो एज अ रोमिंग पर्सन, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेडिशनल विंगर. फॉर एग्जांपल, Neymar on sometimes I'm not saying all, sometimes becomes a roaming playmaker on the wings. रोमिंग प्लेमेकर अंदर आते हैं, थोड़े मिडिल में भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है. और जो मिडिल में आता है, द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड विद प्रोवाइडिंग द विथ फॉर द टीम इज द फुल बैक ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक. नीमार अगर लेफ्ट से अंदर आ रहे हैं और मिडिल में थोड़ा खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो लेफ्ट विंग बैक हैं, उनको बोला जाएगा कि भाई आप विथ प्रोवाइड करिए टीम को.
ठीक है, नेमार अंदर है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब करते हैं, ए आप ओवरलोड भी कर सकते हो सेंटर में, बी आप ओपोनेंट्स को कंफ्यूज भी कर सकते हो विथ योर पोजीशनिंग, ठीक है। यू कैन स्ट्रेच द डिफेंसेस। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड पर्सन हु कैन probably be a roaming playmaker playing on the flanks for you. So yeah. रुको, अभी मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ एंड we'll then talk a little bit more about football. Mm-mm. 2 मिनट दो बॉयज। Just be taking your comments as well। 2 मिनट। मतलब बेसिकली स्ट्राइकर के थोड़े पीछे रहते हैं, नहीं एग्जैक्टली नहीं, पर रोमिंग फ्लैंक में भी आप स्ट्राइकर में हाफ स्पेस पे भी आप फंक्शन कर सकते हो और आप सेंटर में भी फंक्शन कर सकते हो। तो आप एग्जैक्टली आप नंबर 10 वाला रोल भी नहीं बोलोगे, बट एग्जैक्टली आप विंगर का रोल भी नहीं बोलोगे, समवेयर इन द मिडिल। तो इट्स दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, ठीक है। भाई विनी जूनियर एंड पार्टी में से आपको क्या लगता है लॉन्ग रन नहीं कौन ज्यादा बढ़िया प्लेयर बन के निकलेगा? यार विनी जूनियर, आई अभी करंटली इफ आई एम लुकिंग एट द डेवलपमेंटल आर्क, अगर खाली बोलूं कि जैसी डेवलपमेंट चल रही है दोनों फुटबॉलर्स की, आई थिंक विनी जूनियर इज थोड़ा फार Vinny Junior is far away from Ansu Fati right now. And I just said Ansu Fati थोड़ी unlucky रहे हैं with injury issues currently, but Vinny Junior with the way he's taken every game, with the way he's played in almost every game since being a regular for first team for Madrid is legit fire. So I think Vinicius Junior, the future is looking much more brighter for Vinny Junior. Barca are playing more players in same position which are not their natural position like Kunde. Does this affect in big game? No, I think that's reading too much into it. I don't think so, क्योंकि एक होती है चीज पोजिशनल वर्सेटिलिटी, ठीक है। एंड आई थिंक जावी बिलीव्स इन इट। जितना ही मैंने नोटिस किया, जावी बिलीव्स इन मेकिंग हिज प्लेयर्स पोजिशनली वर्सेटाइल एंड यूजिंग प्लेयर्स अकॉर्डिंगली, और वो ट्राई करे ये चीज यूज करने को विद बार्सिलोना। That is not the reason why they are losing games, or they lost 1 or 2 games. That's not the reason why they do that, or why sometimes they put in substandard performances. The reason is completely different. This, on the other hand, uh, will be a benefit for them because, as I said, right, depth के बारे में जो बात कर रहा था, depth ये सब चीजों से ही आता है। Yuj Kunde could be employed in a 3-man centre back system, could be employed as a right back, equally effective, not equally effective, equally natural in both. आई थिंक यूज कुंडू को मैंने राइट बैक पे भी देखा है, ठीक है। फ्रांस के लिए भी राइट बैक के लिए खेले हैं 1-2 गेम। सीन में राइट बैक, ऑल्दो थोड़े ऑफ है राइट बैक रोल में, बट आई डोंट थिंक सो उतना ऑफ है कि मैं बोलूँ कि सेंटर बैक और राइट बैक के रोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है विद यूज कुंडे। आई डोंट थिंक सो दैट इज द केस, ठीक है। सो I think if I've answered a question, positional versatility is a very important thing in football, and I think Xavi takes a lot of interest in that. And we have the big man on the stream, and मैं उनको ऐड कर देता हूँ। सादिक भाई, क्या हाल है भाई? सादिक भाई in the stream guys। सादिक भाई ओपी हो जाए guys। सादिक भाई, how do you do, क्या चल रहा है? गुड, नथिंग। संडेज एट वर्क यूजुअली होता ही है कि डॉक्यूमेंट वर्क होता है। आज थोड़ा कम था तो आज लाइक ठीक है, इसलिए आई डिडंट कमिट अर्लियर, क्योंकि वो हाँ मैंने काफी पता चलता है कितने पेपर वर्क और क्या कुछ पड़ा हुआ है आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, नाइस तो नाइस।
Chalo, तो क्या करते हैं? I think guys, you must have seen Sadiq bhai a lot more than me over this week. ठीक है. So I let Sadiq bhai take the floor right now. Sadiq bhai, Barcelona so far for you. 3-0 against Elche as well. Learnings क्या लिया आपने I think it बार्सिलोना से? was a it's a it's exactly the same as we predicted earlier. It's a team that will take some time to gel up. हाँ. But one thing that people, the Bayern loss sort of covers up is that how quickly this team is actually gelled up. हम्म. क्योंकि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ गेम प्ले देखो वो बायर्न वाला गेम तो हम्म. आई थिंक वो होता है ना आई नो देयर आर नो मॉरल विक्ट्रीज इन फुटबॉल यू हैव टू विन द गेम ऑन द पिच हम्म. बट अगर वी यूज अ मॉरल विक्ट्री टर्म तो obviously Barcelona had that in spades over Bayern Munich in that game. हम्म. हम्म. मतलब आपको अगर कोई एक टीम स्ट्रक्चरली फुटबॉल खेलते हुए दिख रही थी प्रॉपरली हम्म. in that game between those two teams it was Barca more often in those 90 minutes as compared to Bayern Munich. हम्म. पर तो हाँ, ये बोलो आपको बोलो. नजर आया है कि ये टीम डेवलप कर रही है मतलब एज आई सेड इट इज स्टिल नॉट द फिनिश प्रोडक्ट इट्स फार फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट हम्म. बट यू कैन सी रियली रियली गुड नॉट जस्ट ग्रीन शूट्स आपको एक्चुअल प्लांट उगता हुआ नजर आ रहा है अब हम्म. इस चीज वो भी है, पर जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे और सम ऑफ दीज प्लेयर्स, जैसे एक क्वेश्चन था और उस पे मैंने तो अपनी राय बताई, पर आपकी राय भी जानना चाहता था कि Javi is using players, some players who are not naturally fit for that position. Like an example for यूल्स कुंडे. ठीक है, वो एग्जाम्पल ही दिया था, मेरी तरफ से एग्जाम्पल नहीं है, फैन की तरफ से एग्जाम्पल आता है, यूल्स कुंडे. Do you see this as a deterrent to not win games or in the future for substandard performance in the future? मेरा आंसर था नहीं, because I think positionally versatile होना एक evolving demand है फुटबॉल में. ठीक है. And I think Javi understands that, Javi respects it, and I think Javi wants to utilize that in terms of, if you're talking about squad depth, that is what is squad depth. कि आप एक प्लेयर को दो तीन जगहों पे खिलाने के लिए अडेप्ट करें. तो what are your opinions on this? I agree with you but my outlook is from a different angle to it मतलब again I agree ये with you वाला for that क्वेश्चन, कि भाई ये वाला हाँ क्वेश्चन. exactly it's not just the versatility it's also understanding how this structure or this philosophy works आपको ये चार टीमों में इस वक्त वर्ल्ड अगर आप यूरोपियन फुटबॉल में चार टीमें देखो तो आपको ये फिलोसफी नजर आती है एक आपको मैन सिटी में नजर आती है एक आपको आर्सेनल में नजर आती है एक आपको अभी आपको बार्सिलोना में नजर आती है अभी आपको इधर भी नजर आएगी, चेल्सी में भी नजर आएगी. चेल्सी में भी कुछ हद तक और आपको इसके ग्रीन शूट यानी कि अर्ली अर्ली रूट्स डलते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी नजर आ रहा है हम्म. हम्म. बहुत अर्ली रूट्स आपके इसमें आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी नजर आ रहे हैं द की टू ऑल ऑफ देम इज दैट दे ऑल कम फ्रॉम द टोटल फुटबॉल फिलोसफी हम्म. ठीक है ना हम्म. टोटल फुटबॉल अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि टोटल फुटबॉल की दो मेन टेनेंट्स होते हैं एक है कि द फर्स्ट वन बॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट एंड इजीएस्ट वे पॉसिबल Correct. Yeah. अब वो आप टिकी टाका करके क्योंकि व्हेन यू हैव जावी इनिएस्टा बुस्केट्स पेड्रोस एलेक्सिस सैंचेज मेसी दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स आप टिकी टाका बॉल रोटेट करके करो व्हेन यू हम्म. हैव दीस फास्ट विंगर्स विद द लेवेंडोव्स्की एंड एन एडप्ट मिडफील्ड तो आप क्या कहते हैं सिटी की तरह या जो बारसा कर रही है उस तरीके से करो हम्म. आर्सेनल की तरह करो उस पूरे सिस्टम में द कन्वेंशनल पोजीशंस डोंट वर्क a हम्म. conventional center back, हम्म. right back, हम्म. left हम्म. back, हम्म. 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 CTM, cam. Like, there are roles defined as per the zone of influence of that player. हम्म. हम्म. तो उस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से यू नीड अ प्लेयर तो उसमें फिर हम्म. आप कह सकते हो ठीक है पोजिशनली वर्सेटाइल प्लेयर्स आर नीडेड बिकॉज दे डोंट हैव टू कंफॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एट ऑल टाइम्स हम्म. अगर आप जूस कुंडे को देखो तो when he's defending like a third center back or a back three center back would defend हम्म. when he's attacking, he's probably being more of kind of an inverted या a defensive fullback position. हम्म. तो उसका हम्म. रोल जो है वो थोड़ा सा it's like he has to conform into a positional zonal role rather than the conventional role. So it's not that Jules Kounde is being played out of position.
In fact, I would say Jules Koundé is being played in his exact position, utilizing all of his traits. कि वो एक फास्ट डिफेंडर है, ही कैन डिफेंड अ वाइड एरिया ऑफ स्पेस। उसको अगर आप एक सेंटर बैक की तरह डिफेंड कराओगे तो आप अननेसेसरली जो राइट साइड वो डिफेंड कर सकता है अच्छे तरीके से, आप उसको वेस्ट कर देगा। इफ यू सी हिम अगेंस्ट सादियो माने इन द बायर्न गेम, he was brilliant. मतलब barring that one Leroy Sané वाला जो phase था, which was not just his mistake, it was a bunch of things going wrong with the structure हाँ because मतलब he lost the ball quickly. I'm glad you came to the Bayern game. मैं Bayern game पे एक चीज मैं शायद मैं बोलना चाहता था, which is बहुत फ्लैक मिला अलोंसो को, बट मैं ये चीज बोलना चाहता था कि आपने फर्स्ट, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ चेल्सी फैन पर्सपेक्टिव, मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में अलोंसो डिड अ डिसेंट जॉब। ठीक है, फर्स्ट हाफ में Yeah, he अलोंसो was डिड brilliant. अ प्रीटी डिसेंट He जॉब, was brilliant क्योंकि because आप हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि लेरॉय साने वाज द ऑलमोस्ट द ओनली प्लेयर प्लेइंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक, सो अलोंसो ने उसको साइलेंट रखा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ, वेरी वेरी साइलेंट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में क्या हुआ कि आप वो वही हाफ स्पेस में मुलर भी रोम करने लगे। ठीक है, मुलर भी आ गए, वो रोम करने लगे वो हाफ स्पेस में। लेरॉय साने थोड़ा और वाइड चले गए, और उधर जब भी अलोंसो के पास बॉल आती थी तो तीन लोग अलोंसो के ऊपर कन्वर्ज कर जाते थे, और अलोंसो यूज्ड टू पंट इट आउट। ठीक है, ऐसा कुछ करते थे, which used to be which is Alonso, like it is, he's not persistent, every Chelsea fan knows it। ठीक है, he's not। ठीक है, true. every Chelsea fan knows it। So आप Barcelona made that tweak in the second half, and that reaped rewards for Leroy Sané, because Alonso को समझ में नहीं आया कि कौन से प्लेयर को कंटेन करे, मुलर को कंटेन करेगा या साने को कंटेन करेगा। ठीक है, एंड मोर ऑफन देन नॉट इट कुड बी ईदर मुलर या मुसियाला ऑन दैट हाफ स्पेस। ठीक है, और if he used to contain Muller, Musiala, Leroy Sané just used to roam freely। ठीक है, एंड आई थिंक और वो आपको, भी हाँ, सेकंड गोल में वैसा आपको एक जोन मिला, सेकंड गोल में आपको थोड़ा वैसा देखने को मिला। और वो भी क्यों हो रहा था, क्योंकि you conceded one goal against the run of the play by a set piece, bad defending हाँ, on a set piece. ठीक है, the yeah, flag that yeah, Alonso got was for losing his marker on that set piece. exactly, yep, and that मतलब अगर translated the वो whole game। उसने बोला कि भाई अलोंसो का हाँ होल गेम अच्छा नहीं था। अरे नहीं यार आपका पूरा, हाँ क्योंकि गेम स्टेट पूरा चेंज हो गया ना, हाँ गेम हाँ, नहीं स्टेट पूरा समझ में आया चेंज हो गया मुझे समझ में आया। फॉर अ मोमेंट। लाइक इमेजिन अ टीम दैट्स बीन so dominant, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ वाज लाइक बाय इवन द मोस्ट, क्या बोलते हैं, द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ एस्टिमेट्स, द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ एस्टिमेट्स 2-0 तो ऊपर जाना ही जाना था, मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ एस्टिमेट्स। अगर ऑन any other day with Lewandowski and Pedri with their, I'm saying even with their average shooting boots on, not even with their elite shooting boots on, वो 2-0 होना था फर्स्ट हाफ में। तो अगर आप 2-0 नहीं, आप 0-0 जा रहे हो and you know you have played a brilliant half and then you have conceded this kind of a corner, you are wanting every, and I think that corner was probably the first actual proper offensive move yeah, first offensive Bayern contribution का। from Bayern। एग्जैक्टली वो एक शॉट आया था सैबिट्जर का, लेकिन वो इतना भी करीब नहीं था, दैट वाज फेयरली वाइड। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर ऑफेंसिव मूव दैट बायर्न हैड मेड, जिसके Yeah, जिसका आपको yeah, लगा कुछ होगा, बिकॉज़ उससे पहले गोरेट्स्का का शॉट सेव किया था टर स्टेगन, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट। तो उसके फौरन बाद यू कंसीड द, आई मीन यू कंसीड अ गोल ऑन दैट, you have all that backlog of never having won in the Allianz Arena. Because what we tend to forget sometimes is that the players are also human beings. It does work in true। your head. Bhai, they have scored. We have to score one now immediately, and we have been missing chances left, right, and center, which we would not have missed any other time. So what I noticed with Barcelona was बार्सिलोना ने अपना जो बिल्डअप है ना, आई सेड इट प्रीवियसली आल्सो, कि इस सिस्टम का बिल्डअप एक रिदम में चलना चाहिए, एक पेस आपने सेट किए होते हो, व्हिच इज नॉट अ स्लो टिकी टाका पेस, व्हिच इज नॉट अ लिवरपूल हेवी मेटल पेस, इट्स लाइक अ रिदम व्हिच इज समवेयर इन बिटवीन। अगर आपने सोसिएडाड वाला मैच देखा हो तो उसमें इनिशियली बार्सिलोना वाज ट्राइंग टू प्ले टू फास्ट they were एंड true, दे वर नॉट गेटिंग इनटू they दैट were रिदम। हाँ हाँ वो तेज खेलने की, वो अपने रिदम से थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट टू कैच सोसिएडेड ऑफ गार्ड, कैच अ प्लेयर लाइक जुबिमेंडी ऑफ गार्ड। Second half में when they got the right horses for courses and they slowed down their pace a little bit,
they ended the game in 15 minutes with 3 goals. Hmm. Hmm. तो वही वाली चीज फिर होगी अगेंस्ट बायर and when that नहीं. started happening, Hmm. if you all, I mean, if you can remember, Dembele lost the ball. Even Hmm. Mazraoui ने play की in between a lunging Dembele and I think Pedri was the midfielder there. उन दोनों के बीच में से play किया. हाँ हाँ That हाँ loss of ball ने क्या हाँ. किया कि Alonso, we all know, is slow in transition. Hmm. Hmm. It caught Hmm. Alonso off guard. Hmm. By the time he tried going back, Araujo, who was defending his natural position where he was supposed to defend, had to commit a little bit more towards the left. Hmm. Kunde had to try to sort of cover, and Kunde was caught halfway in between. क्योंकि अगर उधर cover करने आता, he was leaving Mane open on the क्या बोलते हैं far होगा near होगा नहीं हाँ on the far side. On the तो far side. exactly या on the weak side आप बोल सकते हो. हाँ तो हाँ उसमें वो हाँ. उसमें वो उसको छोड़ देता. When he Hmm. was caught in two minds, that allowed a little bit of space to Leroy Sané. And now this also has to be understood that Hmm. as well as Barca played, you were playing against a team that was also full of elite talent. Yeah. But Yep. you were That's playing a true. team that was very much your equal in terms of talent also, man to man. No, that's true. That's true. I mean, you discounting Bayern after halftime. Everyone who was discounting Bayern after halftime, matlab, should not have done that because Bayern, on the Exactly. from an overall standpoint, Bayern is Bayern. So तो even आप the जब दो गोल resources. डाउन हो जाते हो Hmm. तो आप फिर हड़बड़ी में और तेज खेलने की कोशिश करते Correct. सही बात. हो आप और बॉल्स लूज करते हो and the Correct. more you lose balls, not I mean it was why I would say इतना Alonso का भी गलती नहीं है क्योंकि Alonso was being asked to track back even much Hmm. more and much faster and to cover, And which he he was can't do it. able to And he do. can't do it. No, he can't do it. लेकिन फिर भी वो कर रहा था, वो बॉल विन कर रहा था, लेकिन हो ये रहा था कि that slight increase in pace by Barcelona, not in intensity but in pace of the game by Barcelona itself, Hmm. आपने अपना सिस्टम खुद थोड़ा सा खराब कर दिया. The structure of your system was slightly overstretched एक तरीके Overstretched. से. उसमें फिर वो मिस्टेक्स जो सेकंड हाफ में आपको लग रही थी. Hmm. Bayern was also pressing, but then Barcelona was also playing into the hands of Bayern because they were 2 goals down. Also, I think Bayern were making overloads to were making overloads in very good positions. ठीक है, not just Alonso's flank. मतलब Bayern were even doing it out wide even on the left as well. ठीक है, मतलब उनके लेफ्ट पे, बायन के लेफ्ट पे, बारसा के राइट पे. ठीक है, तो Bayern were doing that on both flanks and that really disturbed the structure of Barcelona. ठीक है, against in वही that बात है ना. particular game. हाँ. The one thing that Bayern did very well was they realized that Barcelona is trying to be a little bit faster. So Hmm. they will be a little bit more rash in their decision. थोड़ा सा हाँ. press, man to man press ज्यादा करो. Hmm. They will turn the ball over. They will turn the ball over. Correct. Correct. They will turn the And ball that over. is, I think Javi should have learned that lesson right now. That is a thing that Javi He needs should to have work just with. told his team, no issues, we are 2-0 down. हाँ. Just play as if we are playing at a 0-0 game. जीरो Play जीरो like या that. या 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 या. ये जो अर्जेंसी वाला स्विच है पूरा, मतलब मैक्स मैक्स पे मत करो. शांति से Hmm. एक एक करके करो. मतलब एक एक करके तुम हाँ. पूरा का पूरा फैन टर्न ऑन करो, And वैसा टाइप. हाँ. despite that, after the second goal, the best chance that was created was Pedri. Yes, Pedri पे The आना bar. था मुझको. I'm great. It's great that you have got it to the Pedri wala topic because the Banshu का एक था. Pedri has to be the young midfielder out there. His vision and his passing is out of the world. At the age of 90, the things he can do is simply unbelievable. He is priceless. On Twitter as well, there are a couple of people who were saying that Pedri uh, was better than Musiala on the night. And that's a raging debate. That's a very good See, topic to have a debate on. I would say this debate on Twitter is actually futile. Yeah. पता है क्यों? Uh, What we are doing is, this debate actually, in my opinion, I need to take into context, say, a decade or so back. When the initial debate about Ronaldo versus Messi started, why could the debate initially be born is because there was no social media when these two guys started. right, right, So there was a logical discussion going on in the initial days. right. So this discussion allowed for some logic and some semblance of normalcy to be there before it just Mm, burst out at the seams when social media's advent came across. mm, 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 mm.
Mm-hmm. Abhi, if you start with this Pedri versus Musiala, Pedri is not good, Musiala is not good. I would say, why is this debate futile? Is right now, at least till they are 22, 23, they have had a good 5, 6 years in the senior club हाँ football level. मतलब इनको नहीं डेवलप वो हाँ दोनों ये बनते क्या है? आप ओवरऑल तरह से बात करो which is great. I am also not talking about the debate from an overall perspective, but on the night, like people say, on the night Pedri had a better game than Musiala, and I disagree. I'm not saying Pedri didn't have a great game. He had a fantastic game. But Musiala, second half, he was freaking reborn. He was No, I agree reborn on in the that. second. हाँ, तो मेरा क्या बोलने की बात है कि आप दोनों का गेम कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो भी है नहीं, वो भी सही बात बोल रहे हो आप. That's क्योंकि also true. अगर आप बोल रहे हो मुसियाला वाज प्लेइंग एन अटैकिंग मिडफील्डर, सेकंड स्ट्राइकर, रॉन्ग डॉइटर रोल. Hmm. पेड्री वो मतलब इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू कंपेयर. I mean, it's a high comparison. लेकिन you are trying to compare who played better in a particular game between Javi and Iniesta. It's like you're comparing apples and grapes, basically. Exactly. Apples and peaches. They are both midfielders. They are both in the similar boat of fruit, but they are different. नहीं नहीं, absolutely get it. But मतलब when the it thing is, comes, the only thing they have in common, in fact, I would say Bellingham, Pedri, Musiala. The only thing these three have in common is they are all 19 years of age. That's it. they are. Bellingham is like vastly different than these two. Vastly different than these two. I mean, you Exactly. cannot compare Bellingham. You can, मतलब it's I will tell criminal you, to put Bellingham in that bracket. He's this he's vastly debate different. Uh, This debate we lived through in our younger days when we used to compare Scholes, Lampard, and Gerrard. Yep, true, true. These three are the same thing. Scholes is like a Pedri, Hmm. Musiala is like a Lampard, Hmm. and Bellingham is that Gerrardesque kind of profile of a midfielder. Bellingham नहीं, but अभी ना सादिक भाई, I would beg to differ there a bit with Dortmund. मैं Dortmund के थोड़े recently games देख रहा था मैं. With Dortmund ना अभी right now, I don't know. Right now he's being employed in a slightly more deeper role than a Gerrard. ठीक है. He's being employed हाँ in a मतलब मैं वही बोलना slightly चाह रहा more. था कि Gerrardesque role in the sense कि Gerrard was having that versatility to move attack to a deeper role में भी खेलता था वो, Hmm. attack में भी खेलता था according to the requirement of the team. मतलब if I'm talking about the Gerrard, I would say he's like an advanced playmaker from a midfield position. Okay, from a center midfield position, I would say he's like an advanced playmaker. That's my understanding of how a Gerrard would function. Musiala, sorry, not Musiala. Bellingham, on the other hand, is probably operating a little bit more from a number six position right now for Dortmund as a deep lying playmaker. And I think that is वो late runs जो करते कभी कभी box में, driving runs जो करते कभी कभी box कभी कभी into the opponent half spaces. I think he's doing that a lot right now from that particular position, and his profile has been changed, I think, this season, because I'm very sure he was in that मैं attacking आपकी बात midfield से एग्री कर position रहा हूँ. last season. मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा था जेरार्ड के बारे में कि द जेरार्ड यू रिमेंबर दैट वाज एट हिज पीक वाज द वन दैट यूज्ड टू प्ले विद जावी अलोंसो. तो Yes, जावी yes, अलोंसो वाज अ yes, डीप फॉर हिम. yes, ठीक है. yes, 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 But what I'm saying is that once Javi Alonso left, Gerrard could do the Javi Alonso role while allowing other people to yes. move forward. वो वाला Mm-hmm. तो Bellingham has that versatility in him कि वो दोनों चीजें कर सकता है. क्योंकि last season when Gio Reyna was not there, Mm. when Giovanni Reyna was not there, and he had a Julian Brandt who was fully fit, and a Julian, I think दूसरा कौन था, वाइगल था शायद, पीछे कौन था उसके साथ. वाइगल ही था. हाँ वाइगल था. वाइगल ही था. वाइगल था. हाँ तो वाइगल और ब्रांड पीछे खेलते थे. And when Gio Reyna was not available, he was injured for most of last season. Yes, Bellingham he took was. that responsibility. आगे वाली. Yeah, Now that yeah, Gio Reyna is there, Gio Reyna is playing आगे, and Bellingham is gone beside a Weigl to play in that role, and Brandt is coming off the bench. correct. Something like that is what Dortmund is doing this season. Yup, कुछ इस yup, तरीके का yup, on the plan. yup. So I think you Shifting. probably find him more advanced now. Uh, अगर आप देखोगे, especially with Marco Reus unfortunately getting injured, hmm. आप you will see probably the wider role रहना चला जाएगा उस तरफ, and Bellingham will again move into the sort of an advanced role for the Right, rest of the season. right. Let's move on from Barcelona right now, because I think thumbnail पे भी जो चीजें मैंने रखी हैं, we'll discuss about that. But let's take this quickly. Suresh का comment, say something on Fede Valverde, his future Madrid's captain. Fede Valverde के बारे में Brilliant. कितना बोले, मतलब I think we have waxed lyrical about Fede Valverde a lot. ठीक है. I think But जिन लोगों ने मुझे अभी तक सुना है ना,
mm, इतने तकरीबन साल होने को आ जाएगा अभी। तो mm, दे मस्ट हैव नोन कि हाउ मच आई रिस्पेक्ट रॉय कीन की जो मेंटालिटी थी। mm, mm, मतलब आई डोंट, प्लेयर प्रोफाइल वाइज दे आर वेरी डिफरेंट प्लेयर्स। रॉय कीन इज मोर राइट मिड, ही प्लेज सेंटर राइट, वो वाइड ज़्यादा खेलता है। mm, हिज मेंटालिटी रिमाइंड्स मी ऑफ रॉय कीन, कि अगर कुछ नहीं चल रहा है एंड इफ ही हैज डिसाइडेड कि आई हैव टू ग्रैब दिस गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, mm. he will even literally grab someone by the scruff of the neck to Yeah, make yeah, him. yeah, yeah, मतलब वो yeah. वाली Indeed, बात है। तो indeed. हाँ, तो Fede has that, what do you say, how do you say, he has that in really good terms, he has that dog in him, as we say ना, Mm, as the English phrase आता है ना, this guy has the mhm, dog in him. So he mhm. has that dog in him who will go and bite you at the right And time. what do you feel about Asensio right now at a place where at a time when he got so frustrated with Ancelotti that he didn't come onto the bench against Mallorca, come off from the bench against Mallorca, got visibly frustrated at Ancelotti. Then next game, Ancelotti gets him in and he scores a goal, and then he does that action. Okay. Marco Asensio, a conundrum for Real Madrid. Don't you feel that is the scene I think the for? injury actually, his injury actually ruined him quite a bit because he was uh, Um, बहुत सारा उसका स्पीड जो है वो चला गया उस वजह से, जो कि उसको hmm, इवन एक और ज्यादा डेंजरस प्लेयर बनाता था। बट आई थिंक इट्स hmm. मोर अ टेस्टमेंट टू हाउ एंचेलोटी इज एज अ मैन मैनेजर, Correct, absolutely. कि The प्लेयर way he इतना handled that उसका मूड situation was खराब, crazy. Hmm, मतलब आप देखो ना, दिस वाज समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई मीन एट अ लोअर स्केल ऑब्वियसली दैट चेल्सी इज हैविंग विद हकीम जियक और अ पुलिसिच राइट नाउ। hmm, 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 वो लोग भी hmm, खुश नहीं है एंड यू नॉट hmm, एबल टू hmm. पुल द परफॉर्मेंस आउट ऑफ देम डिस्पाइट दैट। Yeah, Ziyech, almost तो like watching हाँ, a school kid play football. So एग्जैक्टली। तो yeah, yeah. असेंसियो इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु नोज ही इज वेरी टैलेंटेड, Hmm. at the same time he also realizes physically he's probably not the same person that he used to be a couple of years back. Right, right, दैट absolutely, अफेक्ट्स यू मेंटली absolutely. आल्सो, कि जब आप वो चीज होते हुए देखते हो, मायोर्का का गेम है, फंसा हुआ है, 1-1 है, एंड यू आर लाइक Hmm, एक गोल पड़ गया, 2-1 हुआ है, व्हाई नॉट गेट मी एंड किल द गेम में। मतलब वो होता है, एनी प्लेयर हैज दैट काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ कॉल इट सेल्फिशनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक प्लेयर में hmm, होना चाहिए, जिसको हिंदी में hmm. अगर मैं बोलूँ तो आत्मविश्वास होना चाहिए उसमें वो वाला। Atmavishwas, yes, absolutely, हाँ, absolutely. Uh, एग्जैक्टली, hmm, कि आई hmm, हैव टू डू इट। लेकिन अब नहीं मिला उसको, उसको गुस्सा hmm, आया, आ सकता है। hmm. How the manager manages that, that is the key to the whole scenario. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसका भी एक छोटा सा आंसर दे देंगे। From my end, Wolves, credit to Wolves for coming out in the second half, one man down really well. I think for the first 10 to 15 minutes they were brilliant. They showed a lot of intent, and the thing is, Wolves really have a good attacking arsenal. They do. They have a very good attacking arsenal. They If these guys click together, we can definitely see something exciting. Gonzalo Guedes has been missing for quite some time now, okay, in the European football circuit, and I really do hope that he gets clicking with the likes of Pedro Neto out there, and with the likes of all of these people, because I think they really have a very exciting attacking arsenal with them. That we got to see as soon as the second half began for Wolves. But Man City, being Man City, just sucked them into believing that they could get something out of this game, and they hit them. ठीक है, and they just hit them there. So आपने जब गेम देखा आपको क्या लगा? And obviously, if anybody has to bet their savings on something, please do bet on Erling Haaland scoring a goal for Manchester City next time there is a game. I think you'll be a billionaire. So yeah. Well, I think I wouldn't mind if he scores 2 goals the entire rest of the season except the next game, because the next game is against Manchester United. Manchester United. What do you make of So this year? मतलब सादिक भाई, आप you're watching Haaland play. When you're watching Haaland play for City, we've discussed this a lot, right? We've discussed this a lot last season as well. Ki City needed a number. People were saying City need a number 9. City need a number 9. City need a number 9. City need a number they 9. don't just need a number 9, Uh, they need the right sort of number 9. yes, and
Do you think they got that with Erling Haaland right now, and that is what is clicking for them? Again, I said this like around 7 8 months back when I Hmm. did that podcast explaining the 3-4-3 Javi system Hmm. with the Sunday League pundits. Hmm. तो उसमें यही हुआ था कि मेरे से उस वक्त काफी बात चल रही थी कि हालैंड टू बारसा हो जाएगा, बारसा शुड गो Hmm. फॉर हालैंड एंड नॉट लुक फॉर दीज अदर फिक्सेस. आई सेड Hmm. नहीं होना चाहिए बिकॉज ही दिस सिस्टम बिकॉज पेप प्लेज अ वेरी सिमिलर सिस्टम टू जावी. Hmm. मतलब अगर आप ये जो क्रोएशियन फुटबॉल का अगर आप एंड रिजल्ट देखो ना, Hmm. तो इट ऑलवेज एंड्स अप इन अ 3-4-3 सिस्टम विथ एन अनकन्वेंशनल मिडफील्ड. बॉक्स हो Correct. जाए, ट्रपीजियम Correct. हो जाए, डायमंड हो जाए, एंड नॉट नेचुरल फुल बैक्स. यू डोंट नीड Hmm. नेचुरल फुल बैक्स, you need wide players. It's a Hmm. very it's a very zonal philosophy in terms of position. तो उस वक्त जब बात हो रही थी मैंने ये कहा था हालैंड would be the last piece in the system after you have all the components around it. Hmm. Agreed. What I seem to mention in that podcast, I think I did, was that if Haaland goes to Man City, Hmm. he has all the components around him. Hmm. You just need to drop him in there, and then you need to see, okay, then you need to see the craziness that happens. But the craziness that's there, Sadiq bhai, and that's just something I was reading up on. The craziness that's there is Man City at this stage of the season, last time out, last season, at this stage, when it comes to the number of goals that they scored at this stage, aren't exactly far away from the number of goals that they have scored so far this season. ठीक है, from the last season के numbers, they aren't far away. So if you're talking about the impact of Haaland, it's great, but statistically speaking, it's not as significant as we are making out to be, because But last season sometimes with players like Haaland, it's not just the pure numbers that define them. hmm, It's that impact. hmm. Okay, Jao Cancelo, I mean, yes, he can. If you ask me, What can a he play ball! that What a outside the ball foot from Joao ball? Yeah. Cancelo! What a freaking ball! But Cancelo knew कि the way he played that ball, अगर कोई और स्ट्राइकर होता तो उसको थोड़ा अंदर प्ले करता Hmm. तो वो हेड आउट हो जाता because you are playing the ball in between two defenders the quality of Nicolas Sule and Schlotterbeck, who are Exactly, both not tiny, who are both exactly. perhaps taller than Haaland themselves. Sule is Yeah, like 6'6", Schlotterbeck is like 6'4", the same size as Haaland, literally. right, right. And as fast and quick. They are both very, very quick. Sule was recorded to be the fastest defender last year in Last year, Premier yeah, League. yep. He played that ball a little wide, and I was very critical of that ball because I said उसने exact range में नहीं play किया. But then when you rewatch it and you realize who he's playing that ball for and the way he scored that goal, Hmm. they must had an idea in practice or something कि यार इधर तक play करना, overplay होगी over the defender, but I can reach it. Reach it, yeah, yeah, yeah. So this And I is what think, happens. So वो जो डॉटमंड सिटी वाला गेम था, hmm, there was an okay, I will not give him the time of my life to address that guy because he commented something stupid in the chat. I don't know about football and I'm just hating on Man City. But I was not hating on Man City. All the people who I spoke to after that, including you, including Bishan, including everyone, they all said City was having an off game against Dortmund until that point. until the point, yeah, yeah, they did Until the point, City was not for a having a large game. amount of time. They did. Exactly. Hmm. City was not playing a City level of game. I mean, that's the thing what Yes, you get when you're as good as Man City. yeah, तो आपसे एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होती है कि योर गेम शुड बी yes, फ्लॉलेस. yes. And to be honest, the two goals that City got as well were were magical. Matlab, they were not seamless goals that you would say that okay, fine, had a great game. They were एग्जैक्टली. individual moments of brilliance. The एंड two goals इनफैक्ट that आई they वुड got. से कि जॉन स्टोन्स के गोल पे इट वाज सच अ शॉट कि द गोलकीपर वाज नॉट रेडी फॉर इट, वरना इट वाज Yeah. सी यू हैव प्लेड द गोलकीपर. Yes. ठीक है ना, वो Yeah. शॉट रोका जा सकता था कि नहीं. Yeah. मैं बोल रहा हूँ, I wouldn't have expected John Stones to pull the trigger. So if I'm not expecting the player to pull the trigger, ठीक है, I'm not ready for that shot itself. As simple as that. I'm not एग्जैक्टली, mentally वरना ready इट for वाज that अ shot. डिफेंडेबल, वरना इट वाज अ डिफेंडेबल शॉट. Yeah, yeah. So they got those two goals. Hmm. So again, coming back to the Haaland thing, Hmm. what Haaland does is he gives you that unique dimension
to your game कि जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, कि वो आपकी टीम के और आपके उस गेम को थोड़ा सा आगे सॉरी ले जाता है। जस्ट इसका मैं कमेंट ले रहा हूँ, मैं कमेंट ले रहा हूँ, साइड में स्टार कर रहा हूँ, जो सादिक भाई और हमारी डिस्कशन हो रही है, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इट विद कमेंट्स, इसलिए मैं स्टार कर रहा हूँ साइड में कमेंट्स। फंगब अली भाई, आई एम respecting comments there, but कुछ comments बहुत repetitive हो रहे about a certain club and we're trying to cover। चेल्सी तक तो आई नहीं है यार, चेल्सी का थंबनेल है, चेल्सी तक तो आई नहीं है। So I really want to मतलब pace the live, pace the stream in that manner so that सादिक भाई के पास भी आई limited जस्ट से time कि है, मेरे होता पास क्या भी है, limited time है, तो थोड़ा सा मतलब we need to cover a lot of things, so yeah I hope you respect it, एंड so yeah समटाइम्स होता ये है कि काफी सारे कमेंट्स जैसे अब सिटी से रिलेटेड आ रहे होंगे तो वी वांट टू कवर सिटी इन वन गो ताकि सबके कमेंट्स जो उनकी क्वेरीज है वो exactly एड्रेस हो जाए एक हिसाब से। exactly so yeah आप बताओ वरना ना फिर वो सादिक क्या भाई। होता है, वो जब आप जब बात कर रहे होते हो वो ट्रेन ऑफ थॉट थोड़ा सा टूटता है एंड देन यू लूज दैट जो Exactly, अच्छी सी आप बात don't बता want सकते to हो do वो that, चली जाती है। don't want to do that, but anyways आप बताओ। हाँ, तो this is what Erling Haaland brings, हम्म something that no one else has, the his size with his athleticism and his ability on the ball. हम्म हम्म आपने नोट किया होगा he has these acrobatic and crazy touches with his legs rather than going for his head. But हम्म that is what Erling Haaland is. He's a football player who can play with his feet. correct I've correct been trying to reiterate this again and again. He is as skilled as a 5 foot 6 inch player with the ball at his feet. It's just that he's हम्म 6 foot 4 inches tall. हाँ नहीं absolutely he's And a when you're beast six on foot 4 inches tall, हम्म and the other thing is he has a very smart head on his shoulders. हम्म He हम्म can do all those feints and all those dribbles and all those crossovers. He doesn't हम्म do that because at his size and it is and with his bulk and his body, जब आप हम्म वो करने जाते हो ना अपने पैर के साथ, so the torque that you unleash on your lower limbs is so crazy that you can get injured easily. I mean, if you have exactly seen, I've spoken about R9's injuries. right R9 की जो सबसे horrific injury हुई थी, that was a complete non-contact. He went for a classic crossover that he had done maybe millions of times in his sleep also. But he went for that in game, हम्म and the torque was so much, his knee just snapped just by that, snapped without even yeah touching the ball, without पूरा snap. मतलब his patella, everything was gone. His patella had rolled up into his quadriceps. It was yeah that yeah bad. yeah So yeah Haaland is smart enough. Like people say कि यार ये box में भागता रहता है, ball इतना, he knows he knows he doesn't need to do that. ये जो हम्म टीम है उसके साथ, उसको ये करने की जरूरत नहीं. हम्म So why to unnecessarily risk himself? Right. And Sadiq bhai, also, just a brief opinion on this particular aspect of it all as well. I have got my opinion spot on for myself at least. That is Jack Grealish. Okay. Now, Jack Grealish, lot of flack, facing a lot of flack because of statistically not living up to that price tag. Okay, Hmm. that Man City have put on him. But I do feel that Grealish brings a very underrated quality to City's play. Okay, that is winning set pieces. Okay, and winning fouls. That is something that Jack Grealish brings, and also the fact he makes City around him, like once he's on the ball, he enables City to build a structure around him. इसका मतलब शायद मैं आपको बहुत clearly अगर मैं शायद बताऊंगा कि अगर Jack Grealish slows down the momentum of the game, it also allows City to build an offensive structure that would then suddenly enable them to switch on. ठीक है, suddenly enable them to switch on. Do you feel that that is something that Jack Grealish is doing and he will only develop in the future? I don't think so. He's a flop yet. See, I think he will develop. लेकिन जैक ग्रिलिश की गेम में एक चीज नहीं है. देखो, I'll again compare the two because the systems Hmm. are so similar. Barcelona and Man City. Hmm. Rafinha देख लो, Dembele देख लो, they are similar. Rafinha is a similar ilk of winger Hmm. to what a Grealish usually does: carry the Hmm. ball, take Hmm. the ball inside himself. Hmm. But Rafinha also has a very innate instinct of when to pass the ball, when to lay off the ball, when to make the off the ball movement. Hmm. Jack Grealish, when he's on the ball now, Hmm. उसका वो passing instinct, he doesn't have that instinctual passing ability. Hmm. Hmm. वो instinct, sorry, passing नहीं बोलूंगा, एक इंस्टिंक्चुअल लिंकअप एबिलिटी कि मैंने इसको इधर वो बॉल दिया, ये मुझे उधर बॉल देगा, मैं तीसरे को उधर बॉल दूंगा, वो
वो वाला गेम उसका इतना नहीं है रिफाइंड। He doesn't have an instinctive vertical passing ability. मतलब basically that. मतलब I would say he. even I would say even lateral क्योंकि Hmm, I, when I see him and I see a Foden, hmm, or when I see the other players, like even when I see when Zinchenko used to play, hmm, Zinchenko with a Foden with a De Bruyne there, hmm, वो बहुत जल्दी ट्रांजिशंस कर रहे होते हैं इधर से उधर, इन विच दे कंप्लीटली ओपन अप द ऑपोजिशंस डिफेंस। hmm. This. हाँ, कुछ इस तरीके का, यस, दिस सॉर्ट ऑफ वो करता है। Hmm, hmm. तो not for too much time also, that split second more you hold the ball in this system and you have messed up the entire game plan जो कि फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। हाँ, आई अग्री विथ यू, बट आई थिंक मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि होल्डिंग द बॉल अप फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, व्हाट हिज इंटेंशन इज प्राइमरीली, जैसे मैंने बोला कि अराउंड हिम पीपल पोजीशन देमसेल्व्स इन दोज लाइंस, जो बोलते हैं ना जोन्स, 5 वर्टिकल जोन्स में डिवाइड होती है पिच। सो पोजिशनल प्ले जो गार्डियोला जो एम्प्लॉय करते हैं, पीपल पोजिशन देमसेल्व्स इन दोज वर्टिकल स्पेसेस अकॉर्डिंगली, एंड देन सिटी बिल्ड अनदर अटैक, ठीक है, इन दैट फेज ऑफ लेकिन प्ले। इसी को आपको पता है, इसकी प्ले को जब आप आगे ले जाते हो, लाइक द नेक्स्ट एवोल्यूशन इज व्हाट, हम्म, कि द बॉल शुड लीव द बॉल, मतलब अगर मेरे पास बॉल है, ठीक है, हम्म, मैं आपको पास प्ले कर दूंगा, मे बी यू आर जस्ट बिहाइंड मी, यू आर नॉट इन द हम्म, सेम वर्टिकल जोन, हम्म, but I will play the pass to you in the vertical zone you are supposed to be in, हम्म, and it should be so instinctive कि I should know कि मैं इधर pass play करूंगा and you will run while the ball is हाँ, traveling, you are also traveling. yeah, that's true. जैक वही बोल रहा हूँ, जैक ग्रीलिश का इंस्टिंक्ट इसमें थोड़ा सा स्लो इसलिए है, ही इज वेटिंग फॉर द पर्सन टू बी इन दैट But स्पेस। हाँ, correct. आपको वेट नहीं करना उस स्पेस के लिए, आपको पास प्ले कर देना नोइंग दैट यू प्ले। इसीलिए उस्मान डेम्बेले टेंड्स टू लूज अ लॉट ऑफ बॉल्स, especially when he's trying to cut the field through a ground pass। आप देखते हो अक्सर उसमें बहुत लूज करता है बॉल। because he released the ball too early. So वो वो बहुत ही जल्दी जाता है, हाँ, वो वो बहुत ही जल्दी जाता है। ही इज हाँ, द एंटी ग्रिलिश एक तरीके से। he's ग्रिलिश थोड़ा anti-Grealish. लेट, वो Yeah. थोड़ा जल्दी जाता है। He's anti-Grealish. And also, I think Grealish के साथ मुझे अभी तक ये भी चीज लग रही है. I don't think set he's he's set himself into a cohesive setup with City yet. मतलब he's been able to understand the movements of players around him and and understand the timing of the movements of the players around him yet, because I think it all depends on timing. जैसे Mr. Logic भी अभी बोल रहे थे, when you have Haaland, you want to release the ball as soon as possible. That's why Foden and Gundo are better around Haaland. In a manner, I can imagine that that's great. Okay, but when in a match where you want to recycle position and you want to play for set pieces, I think Jack Grealish is a better bet. Okay, because बस Jack Grealish will give you that kind of an onus for the team. So ये सब match situations पे है, but I think Jack Grealish in my head. मतलब हाँ, अगर आप देखो सिटी का जो स्टाइल है, हम्म, the set piece they most like is a corner, or the हाँ, or the set piece that they win the most is a corner, because the मैं बोला ना वही एंड रिजल्ट है, A to हम्म, B, B to C, C to goal। हम्म, वो करो हम्म. आप, अब गोल तक ले जाने में कॉर्नर आपको मिलेंगे। आई थिंक सिटी डजंट गेट दैट मेनी फ्री किक्स। They do. They do because they do. But हमको ऐसा लगता है कि नहीं इन द मिलती रन है ऑफ प्ले क्योंकि मिलता है उनको, उनको इन हाँ, द रन ऑफ हाँ, प्ले मिलता है, वो इनडायरेक्ट फ्री किक्स मिलते हैं, डायरेक्ट फ्री किक्स नहीं मिलती हैं, हाँ। इनडायरेक्ट फ्री किक्स मिलती हैं, वैसे टाइप्स, ठीक है। तो यस, आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली देयर। सिटी के बारे में बहुत बात कर ली, बट थोड़ा थंबनेल में जो टीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं यार। हम बारसा पे आधा आधा लाइव स्ट्रीम ने बारसा पे खींच लिया, बट थंबनेल पे जो टीम है उसके नहीं बारे में लेकिन प्लीज। अच्छा हुआ, हाँ, क्योंकि पॉटर का जो 3-3-3-1 जो लोग बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो लोग थोड़ा समझे नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन देखा, मैंने बोला यार वेदर आई एम ओवर रीडिंग माई 3-4-3 डायमंड या ये वाकई 3-4-3 डायमंड ही खिला रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने लेना चाहता हूँ। Grealish best position in City is midfield position of roamer, but there's KDB, so he can't be in his ideal position. In most other positions, curtailed or at disadvantage. I think left midfield, not left wing, left midfield position पे वो खेल रहे थे Aston Villa के लिए. And there is not exactly a left midfield position in a City setup. You are either a winger or you are either a number 10 or either a part of a double false nine.
ठीक है, तो आप वो जोन पे आते हो। तो आई थिंक ग्रेलिश वो जो पोजीशन जो एस्टन विला में खेलते तो पोजीशन में नहीं खेल रहे। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि मिडफील्ड सेंटर मिडफील्ड में थे, ही यूज्ड टू प्ले लेफ्ट मिडफील्ड, नॉट लेफ्ट विंगर, लेफ्ट प्रॉपर मिडफील्ड में खेलते थे। ओके, तो वो पोजीशन ही नहीं है सिटी में, सो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो इट इज हिज डील राइट नाउ, जैसे हमने लेकिन डिस्कस पता किया है आई ग्रेलिश। थिंक हाँ। कि लेफ्ट सेंटर मिड में, हम्म। बिकॉज अगर आप ट्रांजिशन देखो सिटी का तो वही हो जाता है कि रूबन डियाज हम्म। टेक्स अप द सेंटर सेंटर बैक, हम्म। एक आपका काइल वॉकर राइटिश सेंटर बैक बन जाते हैं, एक आपका जो एम्ब्रिक लपोर्ट है व्हेन दे आर फुल्ली फिट, एम्ब्रिक लपोर्ट टेक्स द लेफ्ट सेंटर बैक। हम्म। आपका कंसेलो जो है ही सॉर्ट ऑफ, अगर फोर्डन नहीं है तो कंसेलो विद दे रहा होता है या कभी फोर्डन विद दे रहा होता है, देन कंसेलो हम्म। ड्रिफ्ट्स इन इनसाइड एज अ सेकंड 6 या अ सेकंड 8। हाँ, सेकंड 8। And the versatility of De Bruyne allows him to shift to the right. करेक्ट। And Bernardo Silva for me is the best right winger for their setup. वही तो है कि Again, आप इन्वर्ट करते हो जोआ कैंसेलो को, सो दैट ही कैन बिकम अ सेकेंडरी मिडफील्डर, एंड जैक ग्रिलिश इज एम्प्लॉयड विद गिविंग यू विथ ऑन द पिच, एंड दैट इज on that particular road we'll come to Chelsea, because this is a very good transition to come to Chelsea, and just thang bali चीज बोल रहे Chelsea पे आ जाओ यार, I get the frustration and on that particular note, enough talk about City and Barcelona, let's jump to Chelsea. Chelsea का setup, a lot of old problems still persist in Chelsea. But the setup is very interesting. When I saw the first setup, it was very, very interesting from a Chelsea standpoint. Although I've seen the setup at Brighton, but it was very, very interesting which players play in that positions. So my reading of the whole game in terms of a setup was Thiago's. It was almost like, and it was a very weird thing. It's very weird thing to say on a live stream. It is almost like there was one centre back, one sweeper centre back. That was Thiago Silva. He was one hmm, sweeper acting behind hmm, two wide centre backs. Okay, hmm. that is Mark Cucurella and Aspilicueta. So Wide centre actually, backs, what? right, thoda more wider than you imagine those wide centre backs going. Okay, Exactly, and exactly. you have these wing backs who are just up there. Okay, who are just up there. They are not being tasked to come back, because the people who are giving cover to these wide centre backs and who are giving cover in those half spaces are Hmm. Jorginho and Kovacic, okay, who have a much more defensive profile in this particular And they zone. It go, was very and interesting. they go, and they go a zigzag back five. They goes very zigzag backfire, and what I'm seeing here is if Sterling is cutting inside, Kovacic is underlapping. Okay, Kovacic is underlapping. Yes. Kovacic is underlapping Sterling, which was very interesting to see. That is another fantastic thing. But what this system does is it frees Sterling in his natural position. It frees Sterling in his natural position. It frees Mason Mount in his natural position. Okay, because Mason Mount is not playing from the wide. He's not an advanced playmaker from the wide. He is He becomes a tasked in 10. being. He becomes a Huh, pseudo 10. he becomes a 10. He is being partnered with Kai Havertz. Kai Havertz was almost like a shadow striker. Shadow striker बोलते हैं ना, जो वो गुरुजी off आपके the पास वो है, कौन सा? वो जो फॉर्मेशन बनाने वाला जो, रुको, मुझे अरे यार वो this मेहनत is मत कराओ something सादिक that, भाई, हमारे मेहनत मत कराओ यार। अरे we'll do ये this चीज, we'll do this on a separate podcast ठीक है, we'll do this on a separate। बिकॉज ये सिस्टम मुझे रटा पड़ा है, ये जो कर रहा है ना पॉटर, हाँ। मतलब मैं देख रहा था, हाँ। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम में आप लोग के पास अभी सारे प्लेयर्स नहीं है उस सिस्टम के। हाँ। हाँ। इसके दो वेरिएशन है, व्हाट आई टॉक अबाउट, a 3-4-3 diamond आई थिंक because वी डू। आई see, आई थिंक वी डू, बट आप पहले बताइए। आई थिंक वी हैव द रिसोर्सेज, बट आप पहले क्योंकि ये बताओ। क्या सीन है, people are confused 3-3-1 3-4-3 diamond in the Spanish version of it, it is called as unios dos unio, हाँ, 1-2 1-2 I've read about that, yeah, 1-2-1. yeah, yeah। So the spine has to be the unios, and the width and the breadth of the pitch has to be the dos. हम्म। तो आपने नो इसमें एसपी was being brought to Barcelona to play this exact position. हम्म। हम्म। Problem was एसपी को इशू आ रहा था क्योंकि जॉर्जिनियो इज नॉट, जॉर्जिनियो बॉल प्लेइंग टाइम पे कैन बी अ डिसेंट फैक्सिमिली ऑफ अ सर्जियो बुस्केट्स या रॉड्री, हम्म। लेकिन डिफेंसिव फेज में ही कांट बी अ सर्जियो बुस्केट्स और रॉड्री।
True. Agreed. उसके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, दैट स्क्रीनिंग डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है हाँ, ऑफ द अग्रीड. बॉल। इसीलिए अपने हाँ, आप को पासिंग लेन में ऐसे पोजीशन करो। देखो बुस्केट्स अक्सर टैकल की वजह से नहीं जीतता बॉल, वो अपने आप को पोजीशन ऐसे कर देता है कि यू अवॉइड गोइंग इन दैट एरिया। करेक्ट. जॉर्जिनियो की डिफेंसिव अवेयरनेस वो नहीं है, दैट इज समथिंग ही लैक्स अनफॉर्चुनेटली। तो करेक्ट. for many people, Jorginho had a very good game because of his passing game. क्योंकि इस फॉर्मेशन में उसका पासिंग गेम और उसका ability to unleash a Kovacic and a Mount and a Havertz up front या Sterling या White से जब कुकुरेला थोड़ा सा up चढ़ता है as a center back, that is Jorginho's domain. You are playing in his area of game. एरिया लेकिन ऑफ. डिफेंसिवली जो एसपी को जो इशू हो रहा था, वो एसपी को हर गेम में होगा if you play Jorginho. Also, that particular half space will continuously be targeted. Why? Because Aspi का एक चीज, and it was very clear, yeah, come on, मतलब I will, he's slowly and gradually going into that 15-16 Ivanovic वाला season. ठीक है. 15-16 Ivanovic वाला season where Ivanovic इसका was एक too. सोल्यूशन है वैसे, हाँ. इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन द सेंस, स्टर्लिंग खेल सकता है वाइड राइट साइड पे। नहीं, नहीं, मैं सोल्यूशन में क्या बोलता हूँ, डेनिस जकारिया इज दैट सोल्यूशन. ठीक है. डेनिस जकारिया इज दैट सोल्यूशन नहीं, फॉर डेनिस जॉर्जिनियो. जकारिया आपको, हाँ लेकिन इफ यू प्लेइंग डेनिस जकारिया यू कांट प्ले जॉर्जिनियो विद हिम, आपको फिर You can't. नहीं, वो नहीं, जो I'm not saying. नहीं, 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 वो नहीं. डायमंड है ना, Dennis कांट Zakaria टर्न इनटू अ Kovacic. स्क्वायर। Dennis Zakaria Kovacic is my हाँ pairing for screening that three-man defense. ठीक है. If सही you है। have to protect the left half space, Batio Kovacic did a fantastic job. ठीक है. And on that right half space, if you have someone, that is for me Dennis Zakaria. But what was being exposed very clearly in that particular game was Aspilicueta's lack of legs. ठीक है. Very very clear. Aspilicueta tried to make runs. मतलब you can see that he's trying to accelerate, but he couldn't. ठीक है. He was trying to accelerate with the ball, but he couldn't. ठीक है. हाँ क्योंकि It's इसी down to his रोल legs. में, हाँ. एग्जैक्टली क्योंकि इसी रोल में अगर आपको परफेक्ट एक ऑप्शन देखना है तो सी व्हाट जूल्स कुंडे डज फॉर अस। Exactly. Exactly. And वो बीच Rudiger में से, last season. Rudiger last season. Rudiger last season. अगर रूडिगर होता ना, अगर अभी हाँ. रूडिगर होता ना, हाँ. तो आप रूडिगर लेफ्ट सेंटर खिलाते, रीस जेम्स, Beautiful, bhai. He यू was a हैव natural fit for this system. भाई नेचुरल फिट फॉर द सिस्टम। हाँ राइट साइड में रूडिगर आ जाता ना, क्योंकि लेफ्ट पे कुकर आ जाता है, रूडिगर कैन प्ले हाँ, राइट हाँ, आल्सो। हाँ, हाँ, natural. He's natural fit for the system, भाई. He's वैसे भी a एंड यू right-sided, गॉट कुलीबाली इन द मिडल, right-footed. He's a right-footed centre एंड यू back. तो हाँ, और पता है वो जो आपका सेंटर बैक का पोजीशन है ना, वहां पे कुलीबाली कैन बी अ ब्यूटीफुल फिट। हाँ, मैं भी वही बोल रहा. मैं तो आई थिंक मैंने आपसे ही बात किया था ऑन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल कि कूलिबाली इज द सक्सेसर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसर फॉर थियागो सिल्वा. ठीक है. ऑल द वे एग्जैक्टली बोलेंगे कैसे गुरुजी कैसे बोल रहे हो, कुलिबाली भी रॉन्ग साइड ऑफ 30 है, बट थियागो सिल्वा इज मच ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 भाई. Right now I can't expect him to play for more than 2 years. Koulibaly, after Thiago Silva is done, Koulibaly will be in that particular position hands down. ठीक है, hands down he will be as a sweeper. लेकिन आप लोग पता है एक तरीके से इसको खिला सकते हो, वहां पे भी स्टर्लिंग अच्छा चल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाइड तो स्टर्लिंग वाज लुकिंग प्रीटी गुड लास्ट गेम, बट विद द इश्यूज दैट काय हैवर्ट्स इज हैविंग, you could go in a setup which is कुछ इस तरीके का, कूलीबाली, कुकुरेला, फॉर द टाइम बीइंग एस्पिलिक्वेटा। ठीक है, the diamond can be rotated into, it could go 3-2-2-3. You turn the diamond into a box, into a square. And to be honest, Sadiq bhai, we are kind of playing in that in that formation for a long time in the game. 3-3 जो नहीं आप वो बोल उसको रहे हो करना ना. पड़ा ना, उसको करना पड़ा because of the issue that he was facing with Jorginho playing as हाँ, a single pivot. हाँ, मतलब नहीं, आप हम डबल पिवट में ही खेल रहे थे. मैं वही बोल रहा हूँ, डबल पिवट वाज लेकिन बैटिंग डबल में कवच. पता है
you will need a little bit of smarts from your midfielders. They have to be intelligent enough to do those things. कि they should know when to rotate the pivot एक तरीके से. हाँ, केस स्टडी में बोलता हूँ, केस इन पॉइंट इज लिवरपूल. नाउ लिवरपूल, आई विल टेल यू व्हाई केस इन पॉइंट इज लिवरपूल. बिकॉज आप जब राइट पे, इफ यू वांट टू डिफेंड योर राइट साइड ऑफ द पिच, ऑलराइट, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज कॉट अप हाई मोर ऑफन देन नॉट. ठीक है, for Liverpool. All right, he's caught up high more often than not. So the person who is tasked with actually being a lot more defensive at that particular point of time is either Harvey Elliott as a right center midfielder, or Jordan Henderson when he's playing as the right center midfielder. All right. So, but in all theory, the right center midfielder is tasked to be a lot more responsible for defensive transitions and have that effective partnership with the right center back. ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस कर पाए एंड हाँ, ताकि दोनों टाइम कर पाए हाउ टू कंटेन दैट पर्टिकुलर पिच इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस. ठीक है, तो वो चीज जब हम इक्वेट करते हैं चेल्सी के साथ, ठीक है, नाउ राइट विंग बैक हियर इज रीस जेम्स. ठीक है, रीस जेम्स को आई थिंक पॉटर ने बोला कि तू पीछे ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है, तू ज्यादा पीछे नहीं आएगा, यू आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड विथ, यू आर राइट विंगर. हाँ, यू आर राइट विंगर, यू आर राइट विंगर. पॉटर ने जो सिस्टम एम्प्लॉय किया था ना, इट इज द कंप्लीट इनवर्स ऑफ व्हाट बार्सिलोना डज व्हेन जॉर्डी अल्बा प्लेस फॉर अस. वो चढ़ जाता है ऊपर, जॉर्डी अल्बा आता ही नहीं पीछे. आप देखो जब से जावी आया है, जॉर्डी अल्बा का एवरेज पोजीशन लेफ्ट मिड लेफ्ट विंगर वाला होता है. करेक्ट. वो या सिमिलर टू व्हाट अ कैंसेलो डज ऑन द लेफ्ट साइड. रीस जेम्स ऊपर चढ़ा हुआ है और उधर का उसका जो विंगर है राइट साइड का, वो अंदर टक इन करता है. जैसे इधर कैंसेलो चढ़ जाता है विथ देने के लिए और फोडन अंदर कट इन करता है. या दैट डिपेंड्स कि किसके पास बॉल और कैसे पास हो रहा है, वो आपस में स्विच करते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं. एंड ऑल्सो अंदर आएगा, तभी उसके साइड का विंगर अंदर आएगा. इसलिए तो मैं बोल रहा था कि जब मैंने बोल रहा था कि जब आप 3-man सेंटर बैक रख रहे हो सामने, जो आपके जो पिवट है, दे आर tasked with screening that 3-man center back and taking control of the half spaces that you will leave when the center backs are so wide. ठीक है, so when the center back उनका जोन नहीं है ना. It's the zonal defensive scheme. It's the zonal defensive scheme. Zone 14 in the box, वो आपके सेंटर बैक की रिस्पांसिबिलिटी है, सेंटर बैक की रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है, जोन 14 के बाद जो बॉक्स का एरिया आता है, दैट इज सेंटर बैक एंड योर गोलकीपर. आपके गोलकीपर को भी इधर आगे आना पड़ेगा टू डू दोस पैरीज एंड कलेक्शंस एंड प्लेइंग विद द फीट. The goalkeeper needs to be a part of your offense in such situations. ठीक है, he needs to, and your defense also as a center back, he has to anticipate those things. आपका जो राइट साइडेड सेंटर बैक एस्पिलिक्वेटा जो हो गया, he will defend like a full back. He will defend the full back zone. जो कि अगर आप कंपेयर करो तो कुंडे कर रहा था अगेंस्ट साडियो माने इन द, अगेन आई एम रेफरिंग टू दैट गेम बट जस्ट फॉर मेमोरी रिकलेक्शन एक तरीके से कि क्या होना चाहिए. सिमिलरली आपका जो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है, ही हैज टू डिफेंड द लेफ्ट वाइड स्पेस, जो भी कुकुरेला करेगा. बीच में हाफ स्पेस बचेगा, उसमें एक में जॉर्जिनियो को ड्रॉप करना था एंड एंटिसिपेट करना था. इवन व्हेन ही वाज नॉट ड्रॉपिंग, अगर दूसरी तरफ से भी अटैक बन रहा था, जॉर्जिनियो हैड टू कट आउट द पासिंग लेन्स ऑन वन साइड. When Jorginho doesn't do that, that area is left open. They play a switch. Very susceptible. Aspilicueta is left isolated. Simple cheese. Exactly. So when Jorginho gets caught out, वो दोबारा दूसरे फ्लैंक पे स्विच करते हैं क्योंकि the entire structure has suddenly changed, become disoriented. Stretched. तो वही चीज है. वो फिर खराब हो जाता है. फिर आप the only issue with this formation is it will produce a lot of chances. ठीक है, offensively तो क्योंकि it plays inside the formation. मुझे टर्म नहीं आ गया, you play within the formation. It is wide yet narrow and compact at the same time. And I think it produced a lot of chances, and what it does is, if you are not proactive with the ball, then this formation is null and void.
because you need to be proactive with the ball. You need to have a 70 to 80% of urgency with the ball almost every time in those 90 minutes. This particular formation is not about recycling possession. This formation is about being a lot more vertical than Chelsea have been in the past. But what happened later on with Chelsea was again a lot of lateral passing. ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ में इतना अर्जेंट हो गए कि भाई मतलब बॉल आया तो रिलीज कब करना है, ऐसा जोन हो गया था कि किसके पास बॉल आया तो रिलीज कब करना है. वही, it has to be fast and quick, but in the right optimum time. मैंने बोला ना, you have to have very very intelligent players. इसीलिए स्टर्लिंग was thriving here because स्टर्लिंग वो खेलता हुआ है मैन सिटी. हाँ एग्जैक्टली. स्टर्लिंग का टाइमिंग वाज ऑन पॉइंट कि मुझे कब पास रिलीज करना है, कब नहीं करना है. ओबामेयांग इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि ओबामेयांग जावी के साथ वो खेलता हुआ आ रहा है, तो ही नोज मुझे कब रिलीज करना है. कुकुरेला अगेन ब्राइटन से खेलता हुआ आ रहा है, लामासिया ग्रैड है, ही नोज दैट स्टाइल. Aspilicueta, okay, because of his legs he looked bad, plus the defensive midfield, वो half spaces defending आपको जो चाहिए आपकी midfield से वो उसको नहीं मिल रही थी. क्योंकि ये शेप जब आप देखो ना, जब आप बिल्कुल आगे चले जाते हो, like you must have noticed when you're really pushing them, then it becomes a 2-3-5. 2-3-5, yep. कैसे बन जाता है? आपका 2 होता है, आपका एक जो राइट साइडेड सेंटर बैक है जो थोड़ा लेस मोबाइल है, one of the center backs, one of the wide center backs and the center back sort of come a little closer offensive shape में. एक सेंटर बैक आपको और ऊपर टक इन कर जाता है टू गिव फर्दर नंबर, जो कि कुकुरेला कर रहा था. आपका पिवट आ गया जॉर्जिनियो, और उसके साथ आ गया आपका कोवा, या आई थिंक कोवा नहीं था, उसके साथ माउंट थोड़ा सा पीछे आ था. जो कोवा तो ऑफ द बॉल क्या रन्स बना रहा था उससे भाई, मतलब माउंट. So Mount and one of the players from the double pivot, that is Kovacic and Jorginho, were always rotating within the game. ठीक है, वो करते रहना पड़ेगा. within the game. This has to happen. Yeah. आपने नोट किया होगा ना, काफी दफा आप देखते हो जब offense, when the other team starts attacking from the left wing against Barca, गावी काफी पीछे आता है और गावी पिवट के रोल में आ जाता है, एंड बुस्केट्स sort of goes on the other side. Exactly. जैसे उधर साथ the ball, because once you win the ball on this side, the first option is to switch flanks, क्योंकि opposition ने अपना overload उधर बना दिया है, तो they are in a disadvantageous position on the other side. जैसे ही आपने इधर बॉल विन किया, स्विच करो फ्लैंक through your center backs. But just taking Kunal का भी comment and उस पे कांटे का भी बात आई थी, पर I'll take this comment first before I jump to the next point regarding Chelsea का setup as well. I think that would be a final point regarding Chelsea का setup. Is Gallagher suited in this 3-4-2-1? He lost too much position there. Sadiq bhai, how do you see Gallagher fitting in here? ठीक है. Gallagher fit होगा not in that double pivot. वो माउंट की पोजीशन में फिट होगा. एग्जैक्टली, थैंक यू. आगे उसको आप पीछे खिलाओगे इस सेटअप में. ये वाला जो सेटअप है 3-3-3-1 बोलो, 3-4-3 डायमंड, 3-4-3 चेंज द शेप टू अ बॉक्स बोलो, क्योंकि गैलेगर अगर उस पोजीशन, पता है गैलेगर का क्या बन जाएगा. एक गेम में ना जावी ने ट्राई किया था प्लेइंग गावी एज, आई थिंक सेकंड गेम था, गावी खेल रहा था इन द पिवट नेक्स्ट टू बुस्केट्स. एक गेम में उसने 3-4-3 यही बॉक्स ट्राई किया था, प्रॉपर इसको बॉक्स करके ट्राई किया था. एवरीवन वाज आफ्टर गावी आफ्टर दैट गेम कि फ्रैंकी को खिलाना चाहिए. ये गावी वाज ट्राइंग टू प्ले द पिवट जहां पे वो बॉल लूज कर रहा था. ही वाज लूजिंग बॉल्स इन द वर्स्ट एरियाज पॉसिबल. या गैलेगर का गेम और गावी का गेम काफी सिमिलर प्रोफाइल, काफी सिमिलर है. आई थिंक आई टर्म बोथ ऑफ देम इन अ वेरी box to box playmaker, if this could be a profile. ठीक है, so box to box playmakers. They are the box to box playmakers, bhai. So I think this is the new profile that we have created live on Adidev's Gurugyaan. But boxers, they are the footballing boxers.
footballing boxes. They are the footballing boxes. So I think that is the profile. And I'm completely agree with you. I think Gallagher should not play in that double pivot where you have to screen the defenders, but you have to screen those wide centre backs. That is not his role. And he should play either as a replacement for a Havertz in that double number 10, Exactly. or replacing Mason Mount, because Kai Havertz. I want to jump into that particular topic as well. Kai Havertz, again, I really don't know what is wrong with the player currently. Okay, we tried him in a different position this time out, and he didn't fill me with a lot of encouragement. Okay, there is मतलब some. Huh, सॉरी ऑनेस्टली जितना मैं हैवर्ट्स को देखता था ना, hmm, आई वाज लाइक यार ये 3-4-3 डायमंड में एट द टॉप ऑफ द डायमंड वुड बी द आइडियल पोजीशन फॉर हैवर्ट्स. hmm. आई थॉट सो, लेकिन या देर भाई मुझे वो नहीं कुछ चल. दिखा नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा हाँ, फ्रॉम काय हावर्ट्स. मुझे कुछ, मैं बात क्या करूं, मुझे कुछ नहीं दिखा काय हावर्ट्स से इन दिस सिस्टम. व्हाट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इज he has been employed now as a right pay advanced playmaker. He has been employed now as a false nine. He's come back deeper into a shadow striker, yeah, number 10 advanced playmaker wala role. ठीक है, he's been employed almost everywhere now. So to kabhi to dikhe ki matlab there is some semblance of, that old Bayer Leverkusen wala Kai Havertz returning. There is something mentally wrong with him. I do feel that there is something mentally wrong with him. Because he's extremely lazy on the ball. Yes, that Diego Costa wala attitude is great. It's lovely. We all love that. ठीक है. But you still need to affect the game in a positive manner. You still need to affect the game in a much more attacking manner than how you have been affecting the game up until now. Right now, if you have Aubameyang in front of you, what I saw in that Salzburg game, if you have Aubameyang in front of you, you're partnering Aubameyang. All you are doing is off the ball. You are arriving and getting numbers into the box, being a number in the box. Okay, you're just being a number in the box. You're not exactly stretching the defense from your movement. You're not doing that. Okay, you are not helping your teammates in passing combinations. और अगर तुम help भी कर रहे हो, that is not amounting to anything great. ठीक है, that is not amounting to anything great. That phase of play is not amounting to anything great. So what is your intention on the pitch? I didn't get it. I really didn't get it. पता है ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि जो जो बातें आपने बोली हैवर्ट्स नहीं कर रहा था, Hmm. ऐसा नहीं है कि हैवर्ट्स वो चीजें नहीं कर सकता. Hmm. वी हैव सीन हिम डू ऑल ऑफ दैट. Hmm. So this again points out to me कि it's not something to do with his ability, Hmm. it is something to do with his mentality right now. Exactly. That's what I figured. Yeah. He is not in the right mental frame of mind. So I think the best option for Havertz right now is get him off the bench. Hmm. Agree. क्योंकि हर मैच में 10-15 मिनट हैवर्ट्स आपको अच्छे दिखा रहा है, Hmm. पर वो 10-15 मिनट स्ट्रेच्ड ओवर 90 मिनट्स. Right. So Right. it's one tiny moment every 10-12 minutes अगर आप उसको एक्सट्रापोलेट करें. And mentality की बात करें, Sadiq bhai, what is this? What is the shitty thing with Chelsea that we have to concede every fucking time when we take a lead? Every See, I time. think Chelsea is trying to channel their inner Real Madrid, but they have to understand that then you need a Fede Valverde and a Vinicius Junior and a Karim Benzema there. Yes, yes. Like Real Madrid are a dream for punters. Are a dream for punters. Real Madrid games are a dream for punters. They will like, ठीक है तुम गोल और मारो. just bet, I think अभी अभी तो मुझे लगता है अगर रियल मैड्रिड कमबैक तो आपको odds भी अच्छे नहीं मिलेंगे. अब तो और अगर दो दो गोल भी मार दिए होंगे, अब तो Real Madrid are still the favorites to win. हाँ, आई थिंक अब तो अगर कोई ऐसा मैच होगा ना कि रियल मैड्रिड विल विन कंफर्टेबली, उस पे आपको बेहतरीन odds मिलेंगे. आई मीन जस्ट बेट ऑन दैट, रियल मैड्रिड विल Yes, विन कंफर्टेबली. yes, absolutely, completely agree with you. But yeah, I mean that is the live stream from us, guys. I think we talked a lot, but I think दो चीजें end में बस मैं ये चीज बोलना चाहूंगा. दो predictions from Sadiq bhai and from myself as well. The Manchester derby and the Madrid derby. ठीक है, let's talk about both of them. ठीक है, let's just get a prediction off our backs. ठीक है, let's talk about the recent one now, Madrid derby. What is your prediction for the Madrid derby? See, in any other circumstance, I would have wanted and I would have predicted an Atletico Madrid win because of obvious reasons. But because I am a Brazil fan first before anything else,
with this entire BS that's going on around Vinicius Junior and him dancing around. I want Vinicius Junior and Rodrigo to dance all over Atletico Madrid and go for like a massive 4-0 win. Destroy them completely. I mean, I know it doesn't help Barcelona's chances, and a Uh, Madrid dropping points would be the best thing. But I'm just ticked off at that. I mean, my inner fan of a Ronaldo, Luis Nazario, and Ronaldinho and Rivaldo and all those people has been ignited by these statements, and I just want Vinicius to carry on in that verb. बट मैं थोड़ा इंक्विजिटिव हूँ ये आंसर लेने के लिए आपसे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी पूछूंगा. डोंट यू थिंक एटलेटिको फ्रॉम प्लेइंग पर्सपेक्टिव, from a plain fan perspective, not from, let's say, on the table, I'm not talking about that, from a plain fan perspective, don't you think Atletico have looked a little bit more I don't know, pleasing ठीक है this season, ठीक है, while playing football? It's a little bit of Simeone finally understanding that there's only so long you can push your players to play that kind of football. That brand of football, yeah. It is effective. It is effective, no doubt. But that's what I mean. I'm not comparing it, but yes, when people call it that they are the Spanish Burnley or Burnley is the English Atletico. हाँ. It after a decade, even Sean Dyche, his brand of football also had to succumb because पता है क्या है एक तो चलो बर्नली में तो ये था ना यू डिडंट हैव द प्लेयर्स विद दैट एबिलिटी ओनली टू प्ले दैट एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल बट एथलेटिकोस प्लेयर्स आर नेचुरली गिफ्टेड अगर आप उनका अटैकिंग टैलेंट देखो करास्को जॉ फीलिक्स आपका मथायस कुनिया यू हैव एंटोन ग्रीजमैन तो भाई 62nd मिनट एंड लेटर मॉन्स्टर बन चुका है डिस्कशन ऑल टुगेदर तो all those players ऐसा नहीं है कि वो अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकते when a player like Koke goes to the Spanish national team भाई वो टिकी टाका कर रहा होता है proper he has that sensibility in him to play that brand of football so it's very difficult to cage in those players to be like a Stephen Savage and even Stephen Savage भाई वो सिटी के उससे आया है भाई मतलब Savage is exactly. like considered the biggest brutes out there, but he comes from a footballing philosophy which is pretty exciting and Pretty enjoyable to exciting. watch. Yes, So yes. having to cage in, I'm not even talking rein in, having to cage in those players into that particular style of football, फिर क्या होता है कि उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और आप जो फुटबॉल खिला रहे हो वो आपस में क्लैश करती हैं एंड देन द रिजल्ट आउट इज नॉट ईदर ऑफ देम. So you do have to give into nature and you have to give into the natural ability after a while. नहीं, completely get it. I think मेरा prediction for this derby would be 2-2. I'm thinking कि I'm thinking Madrid will concede, and I want a 2-2. मतलब मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा. Madrid will concede. मतलब ठीक है 4-0 बोला नहीं 4-1. Madrid will concede. सोचो first goal Madrid concede करी है till the 70th minute, Madrid are still trailing, and I think this is a possibility. Madrid will still trail till the Look, and 70th minute. imagine Madrid scoring 4 goals and winning 4-1 again by the extra time. Yeah, Injury time. Atletico exactly. Madrid will have 9 players. भाई Madrid fans Atletico को तो पेल देंगे literally, मतलब with banter, literally पेल देंगे proper. So that would example that would happen. Now coming to the Manchester derby, what are your thoughts on the Manchester derby? Manchester United fan waking up the Manchester United fan in Sadiq bhai right now. I woke up the Barcelona fan sometime back. Now waking up the Manchester United fan. नहीं देखो so far as much as people are saying I don't want to jinx anything but United's defense looks good. Solid. It looks solid. I'm not saying it looks elite or anything. How was the Europa game? I didn't see the Europa game. How was the Europa game? How did you guys play? It was simple. It was a complete one-sided affair. Again, offensively, we didn't create much, but we got the 2 goals, one through a penalty, one through a Sancho was brilliant. लेकिन डिफेंसिवली एंड स्ट्रक्चरली यूनाइटेड मतलब शेरिफ का एक या दो चांस आए थे व्हिच वर थ्रेटनिंग बाकी नॉट मच मतलब डिफेंसिवली द शेप वाइज वी आर सॉलिड मतलब वी डू लेट teams come on us but we don't let them have that final move it's like that bend not break kind of defense that United has and the four defenders that we have Malacia, Alessandro
Varane and Dalot. Hmm. They are playing very well so far in sync, mashallah. So I hope it Hmm. continues like that. But then Hmm. again, you're faced with a juggernaut like City. Juggernaut, literally. मतलब वो imagine ना the games they are not looking their usual self. They are winning 2-1, 3-0 against decent opposition. Decent opposition, correct. हाँ. Exactly. So, Exactly. and then what? I just hope Lisandro has another one of his games against Haaland that he had last year when playing for Ajax. But then Haaland was playing for Dortmund. So obviously, there's a difference in quality and the service that he's going to get. Right. Uh, I mean, I'm not expecting a win, and especially it's away. Hmm. I think United most likely will lose. Hmm. But if they win this game, then to bhai, then, then then a slight, then then you will see then YouTube then YouTube then there blowing might up. be One MUFC will celebrate. Sadiq Bhai will celebrate on every United channel. You will see YouTube blowing up. like You will then see. there might be some seepage of the inner toxicity coming out. then by then everyone will like Manchester is red, and everyone would freaking blow their lids off No, by because every match. Yeah, then we might have something to say because yeah. say if we pull out a win. Anyhow, I'm saying we have 1% possession. That 1% is on a Ronaldo penalty, and we somehow pull out a 1-0 win. Hmm, hmm, hmm. I don't care. We would have beaten Liverpool, If Arsenal, that and City in happens, the if same that game. happens, then two fan bases will celebrate. One, Cristiano Ronaldo. ठीक है? Cristiano Ronaldo scoring. Great, awesome! Cristiano Ronaldo is back. He's back. When was he lost? He's back, guys. You guys are hating on him, Bekar. You guys were hating on him, Bekar. He's back. He won us the Manchester Derby. He's the man. And the second fan base is Manchester United. Manchester United, like, Pep Guardiola fraud. Guardiola is a fraud. Ganju fraud. Ten All, Hag ball. It's yeah. Ten Hag defense. It's Ten Hag ball. Guardiola is a bald fraud. All of this will start. so, so I expect that to happen. If but all, from a very real perspective, I'm not dissing United at all, but Exactly. from a very real बहुत perspective, बहुत वो I बोलते think हैं ना it's a ख्वाबों की very tough दुनिया में जी task. लिए 2 मिनट Yeah, अब it's a वापस very आ tough जाते task. हैं. It is extremely. It is a very It's very tough extremely tough. task. Extremely tough. In my opinion, I think I would not be surprised if if Manchester City keep around 67 to 68% possession of the ball. अरे Okay, अरे I रखो would. भाई लिवरपूल केpt 60. लिवरपूल केpt Uh, 60 uh, against us. yes, yes, I would not be surprised if most of the game is played in the Manchester United half. I would not be surprised. So, but I think yeah, just as I think Sadiq by 1-0 is still a lot more real pro, prospect than what we're discussing abhi tak, okay, for this game, because if and only if United score first, okay, if only if I think United. United, although I'm not picking United to win and I'm probably going for a City win, but I'm pretty sure United won't make it easy or a cakewalk like how it was last time Exactly, when Pep true. didn't even have to use a single substitute. Yep, yep. So I don't think it's going to be like that. But still, the gulf in quality and especially the gulf in systems right now. Hmm. Hmm. I sometimes believe that if you have a very, very elite system installed, you Hmm. are able to overcome the gulf in quality if it's not as big. बट यहाँ पे क्वालिटी भी डिफरेंट है और सिस्टम भी उनका ज्यादा रोबस्ट है. Hmm. As Mr. Logic says, ball derby can't wait. So, I mean, that's a beautiful way to end this live stream on, guys. I think mainly I think it's a City win for me. I'll be very very honest because Dortmund ke against bhi jaise City were trailing, but then I think City two moments of individual brilliance. That is what Sadiq Bhai was saying. Ki in terms of resources, City have the resources to pull off individual brilliance when they want to. So, इसलिए I think City start as clear favorites.
ठीक है, even if things will not go their way during the match, they have the resources to pull off that individual brilliance. That can happen. So I think mainly भी City are the favorites to win this game. But let's see, मतलब किसको upsets पसंद नहीं है, सभी को तो upsets पसंद है. So if United make an upset, Sadiq bhai will dance, everyone will dance. So I think even Dua will dance along with Sadiq bhai. So I think everyone will dance. Wait, So yeah. I will go full Vinicius. So yeah, I mean that was an amazing live stream, guys. Thank you all for joining. Thank you to the 158 Thank people you. still watching us. Please do hit like and subscribe to the stream. I'll try to try क्या मतलब every Sunday इसी time पे I'll be live, and I hope that Sadiq bhai can join me as well at this particular point of time for every Sunday as well, and we guys can just catch up like this and talk about football for during the week. So that'll be nice as well. And yes, आप लोग जो है कमेंट्स पे आप भी ज्वाइन करिएगा, मजा आएगा. ठीक है सादिक भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम यार. आई नो आपको Pleasure was mine. आपको थोड़ा सा मतलब क्रंच टाइम पे आपको बुलाया था. So thank you for your No, no, time no, as it well. was fun. It was Thank you fun. for time. Thank you to all the people who are watching us as well. Do tune in to the Durand Cup final today. And please do watch the game. It is going to be a legendary game as well. And yes, for the next week of footballing action, best of luck to everyone supporting their respective teams in the comments, and best of luck to United as well, and best of luck to Real Madrid. Atletico Madrid के fans तो I don't think so मैं बात कर रहा हूँ किसी से. So I don't think so कि कोई है Atletico Madrid एथलेटिको मैड्रिड है. के लिए है. Crazy. हाँ. I must like I'm an ignorant fool. But yeah. But anyways, thank you guys for watching, and peace out. Have a great Sunday. Cheers, boys.